I just want, salita mo. Yan sa mutin. Yan sa mutin. कदे फिर मिलांगे भन्ने नाम पे गिर गया. अरे गुड मॉर्निंग. आई एम फाइन. आप कैसे हो? एक ये फोटो एंड वीडियो एडिट. Hi Biswa, I'm from Sikkim. Good morning. Look at my eyes. Puffy eyes. Okay. Let's study, okay?
What's the point of waking up early if we can't study? So let's just study. आप कहाँ से हैं? I'm from सिक्किम. मैं सिक्किम से हूँ. Okay, slurp one यहाँ पर लिख देती हूँ. Will not talk while studying, okay? What are you doing? I'm about to study. SLOT, slot 1, 30 minute. 30 minute. Okay. Begins. We will talk in break. Talk in break only. Time. End this message. Temperature spring on spring से देखना है ना. क्या चीज है? सेकेंडरी जाइलम और कुछ भी नहीं. बाहर में बार्क क्या है बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी चीजें हैं सब की सब बात बड़ी बड़ी जाइलम वेसल्स वाला बहुत सारा ऐसे बोर्ड बन गया. जाइलम इस साइड सेकेंडरी फ्लोएम. नाउ ये पूरे साल एक ही रेट से नहीं बनती. ऐसा नहीं है कि भैया सेकेंडरी जाइलम पूरा साल एक ही रेट से बनी जा रही है. सर्दियों में ये धीरे बनती है, और गर्मियों में या स्प्रिंग में ये थोड़ा फास्ट बनती है. ठीक है, तो हमें वुड जो है वो दो कलर्स की नजर आती है. ठीक है, उसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या चीज? अच्छा ये वाला पार्ट भी के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें समझा दूंगी. अभी पहले मेरी वाली बात सुनो. स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. अब स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या है, ध्यान से सुनो. देखो, पहली बात तो आपको ये देखने के लिए मिलता है ऐसे एरियाज में जहां पे टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है. स्प्रिंग में और ऑटम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है. अब ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, गर्मी होती है ना इक्वेटर के पास, तो आप करेंगे टेम्परेट रीजन्स. ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें. टेम्परेट के अंदर अपने को ये चेंज देखने के लिए मिला है क्या? देखो, मान लो कि देखो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, समझ रहे हो? ये वैस्कुलर कैम्बियम है, समझ रहे हो? इसके अंदर क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम. तो क्या होता है मेरे बच्चों, इधर देखो. पहले आई कौन सा कलर से बनाए? ब्लू. पहले आई क्या थी? पहले स्प्रिंग आती है. पहले आई स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग में क्या है, बहुत धड़ल्ले से सेकेंडरी जाइलम बनता है, बहुत बड़ा सेकेंडरी जाइलम बनता है. तो ऐसे बड़ी बड़ी वेसल्स वाली सेकेंडरी जाइलम बन गया. मान लो यहाँ पे ऐसे. ठीक है, बड़ी बड़ी जाइलम वेसल्स वाला बहुत सारा ऐसे बोर्ड बन गया. इसको मैं क्या बोलूंगी? स्प्रिंग वुड. इस पूरी लेयर को मैं क्या बोल दूंगी? यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग वुड. अब जब सर्दी आई तो सर्दियों में क्या हुआ, इसने वुड तो बनाई लेकिन बहुत नैरो वेसल्स, ऐसे बहुत ही थोड़ी सी लेयर बनाई है, बहुत छोटी छोटी नैरो वेसल्स वाली वुड बनाई ऐसे. तो इसने पतली सी लेयर यहाँ पे वुड की बना दी यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे उसके पतले पतले जाइलम वेसल्स के बहुत ही पतले पतले नैरो ल्यूमेन ऐसे. तो इस ब्लू
कलर की होती है यार, डार्क ही होगी ना यार। तुम कोई चीज पास पास सटा दो, कोई चीज ऐसे चिपका दो, सारी वेसल्स को नैरो कर दो, तो वो चीज तो डार्क होनी है ना। डार्क डार्क होती है कलर, नैरो वेसल्स होती है इसमें। अब ये तो हो गई एक साल की बात, अब ये तो हो गई एक साल की बात। स्प्रिंग लाइट इन कलर होती है एंड ब्रॉड वेसल्स है, ठीक है, स्प्रिंग वुड की। ना ये तो हो गई एक साल की बात। अब अगले साल में क्या होगा, ये रिंग और पीछे जाएगा। देखो इधर ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ये रिंग और पीछे जाएगा और यहाँ पे और नहीं। मिनट। ये मान लो ये रिंग यहाँ पे आ गया, अरे रे देखो अगले साल में ये रिंग यहाँ पहुंच गया, वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम, दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग में वुड बनाएगा, अरे कहाँ कलर है, यहाँ पे स्प्रिंग में वुड बनाएगा, खुली खुली बड़ी बड़ी। ये तो हो गई एक साल की बात। Spring wood, autumn wood, dark, narrow in color. Okay, a vascular cambium. वुड लाइट इन कलर होती है एंड ब्रॉड वेसल्स है, ठीक है, स्प्रिंग वुड की। ना ये तो हो गई एक साल की बात। अब अगले साल में क्या होगा, ये रिंग और पीछे जाएगा। देखो इधर ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ये रिंग और पीछे जाएगा और यहाँ पे और नहीं। ये मान लो ये रिंग यहाँ पे आ गया, अरे रे देखो अगले साल में ये रिंग यहाँ पहुंच गया, वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम, दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग में वुड बनाएगा, अरे कहाँ कलर है, यहाँ पे स्प्रिंग में वुड बनाएगा, खुली खुली बड़ी बड़ी वेसल्स के ल्यूमेन के साथ है ना, लाइट कलर की। और फिर विंटर में दोबारा से बनाएगा ऐसे, विंटर में फिर से टाइट टाइट बनाएगा ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर अगले साल फिर से, फिर अगले साल फिर से। अब देखो क्या है, हर साल मेरे बच्चों, हर साल एक नया रिंग ऐड होता है, एक नया रिंग ऐड होता है। और इस रिंग में दोनों चीजें हैं, हर साल एक नया रिंग ऐड होता है जिसमें कि आपकी स्प्रिंग वुड भी है लाइट कलर की, और एक डार्क वाली भी है, ऑटम वुड भी है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, ये पूरा का पूरा एरिया मिला के हम बोलते हैं वन एनुअल ग्रोथ रिंग। समझ में आया है, वन एनुअल ग्रोथ रिंग क्या है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिला के एक साल की ग्रोथ नजर आएगी वुड में, है ना। वुड सेकेंडरी जाइलम में वुड है ना, तो इसको बोल देंगे हम वन एनुअल ग्रोथ रिंग। किसको, ये बस
spring wood, autumn wood. Spring wood, autumn wood, spring wood, autumn wood. One annual ring. Autumn wood, spring wood. समझ में आई है? ग्रीन और ब्लू मिला के एक एनुअल ग्रोथ रिंग है। बोलिए किसको समझ में आई है? बेटा जी ये सेशन जरा शेयर भी कर दिया करो, है ना? अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए। बोलिए 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 बोलिए, किसको समझ में आ गई है ये वाली बात? रूट्स में भी मिलेगा, रूट्स में भी मिलेगा बेटा। अरे रूट्स में मिलता है, मिलेगा मिलेगा, रूट्स में मिलेगा। क्लियर है? बोलो आगे चलो। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। यस, इससे हम ये रिंग्स काउंट कर करके, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे काउंट कर करके मैं पेड़ की एज बता सकती हूँ कितना एज है। देखो मैं तुम्हारे लिए लेके भी आई हूँ बहुत सुंदर सा। देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये रहा, देखो ये कितना ब्यूटीफुल। सी ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इज लाइट इन कलर। ये लाइट है और फिर एक डार्क पट्टी नजर आ रही है। ये पूरा एक ग्रोथ रिंग है। जो लाइट है और जो डार्क है दोनों मिला के एक ग्रोथ रिंग है, समझ रहे हो? दिस इज वन ग्रोथ रिंग, दिस इज वन ग्रोथ रिंग, दिस इज वन ग्रोथ। ग्रोथ रिंग, समझ रहे हो? दिस इज वन ग्रोथ रिंग, दिस इज वन ग्रोथ रिंग। आप एज गिन सकते हो ट्री की इस तरीके से। ग्रोथ रिंग में हाय बच्चों, आगे पढ़ा दो, तुम लोगों को समझ में आ गया तो। ए तरुणदेव कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है? कैम्बियल रिंग और वेस्कुलर कैम्बियम। हाँ तरुणदेव, कैम्बियल रिंग और वेस्कुलर कैम्बियम एक ही चीज है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉर्क पे नहीं क्वेश्चन कोई पूछेगा। Cambial ring and vascular cambium.
कॉर्क पे भी नहीं आया है। अब एक और कॉन्सेप्ट सुनो मेरे बच्चों, ये तो तुम सीख गए, ये तो तुम सीख गए। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लो, एक और चीज सिखाती हूँ तुम्हें। अब सीखने लगे तो थोड़ा और सीखो, है ना। मान लो ये पेड़ ऐसे कुछ साल पुराना पेड़ है ना, तो मान लो इसका एक ग्रोथ रिंग ये हो गया, 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 है ना। कितने साल पुराना है पेड़? 1 2 3 4 4 साल पुराना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला जो है, अरे नहीं नहीं, ये हमारी ऑटम वुड है, ब्लू कलर की ऑटम वुड है, और जिसमें कोई कलर नहीं किया वो स्प्रिंग वुड है। तो ये मेरी ऑटम वुड नजर आ रही है मुझे ऐसे, ये मेरी ऑटम वुड नजर आ रही है। ब्लू वाली सारी ऑटम वुड है बच्चों। मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, हार्टवुड और सैपवुड का। अभी सुनो, ये समझ रहे हो, ये मेरी जो ब्लू वाली है, दिस इज माई ऑटम वुड, और ये वाली जिसको मैंने कल कुछ कलर ही नहीं किया, ये वाली दिस इज माई स्प्रिंग वुड। अब क्या होता है बेटा, वो तो है ही, जो ऑटम वुड स्प्रिंग वुड ऑटम वुड स्प्रिंग वुड है वो तो है ही। अब क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता है, पेड़ की एज बढ़ती है, जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाता है, क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का अंदर वाला पोर्शन डार्क कलर का होता जाता है। सेकेंडरी जाइलम का, चाहे वो देखो, ये तो डार्क लाइट, ये तो है ही, ये तो अलग चीज है। सेकेंडरी जाइलम का अंदर वाला पोर्शन, चीजें एक्यूमुलेट, करता जाता है। क्या एक्यूमुलेट करता जाता है भैया? गम्स एक्यूमुलेट कर लिए, रेजिन
एक्यूमुलेट कर लिए, ठीक है। क्या एक्यूमुलेट कर लिया अंदर वाले पोर्शन में? रेजिन्स, टैनिन्स। थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लो, एक और चीज सिखाती हूं तुम्हें। अच्छा तो थोड़ा और सीखो, है ना। रेजिन्स डार्क कलर का होता जाता है। सेकेंडरी जाइलम का, चाहे वो देखो ये तो डार्क लाइट ये तो है, ये तो अलग चीज है। सेकेंडरी जाइलम का अंदर वाला पोर्शन चीजें एक्यूमुलेट करता जाता है। क्या एक्यूमुलेट करता जाता है भैया? गम्स एक्यूमुलेट कर लिए, रेजिन्स एक्यूमुलेट कर लिए, टैनिन्स एक्यूमुलेट कर लिए, ठीक है। क्या एक्यूमुलेट कर लिया अंदर वाले पोर्शन में? रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, ठीक है। ये सारी फालतू की चीजें इसने यहाँ पे एक्यूमुलेट कर ली अंदर की साइड। और अब ये किसी काम का नहीं रहा। देखो जाइलम का काम होता है बेसिकली पानी ट्रांसपोर्ट करना, अब ये किसी भी काम का नहीं रहा। इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर। कहां से ट्रांसपोर्ट कर लेगा जब अंदर चीजें भरी हुई है? तो विल नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर, विल नॉट ट्रांसपोर्ट एनीथिंग। वाटर मिनरल्स कुछ नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बेटा ये किसी काम की नहीं रहती पेड़ के लिए। इसका फायदा क्या है? ये बहुत रेजिस्टेंट होती है। इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से, पेस्ट से, इसको कोई खा नहीं पाता। तो बेटा हम क्या करते हैं? पेड़ काट के इसका फर्नीचर बना लेते हैं। हम कहते हैं बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको ना कोई इंसेक्ट खा सकता ना पेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस हार्डवुड। हार्डवुड क्या है? जाइलम के, सेकेंडरी जाइलम के अंदर वाला पोर्शन में कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो पानी ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देता है, बहुत ही रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह से। तो उसको हम बोल देते हैं हार्डवुड। जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला बचा हुआ है, ये वाला बेचारा, इसमें कुछ एक्यूमुलेट नहीं होता, ये पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसको बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड क्या है? डज नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसकी फोटो भी दिखाऊंगी। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑफ कोर्स। does not accumulate anything. के लिए तैयार हो? ये समझ में है तो बोलो बोलो। अरे निकी जोशी थैंक यू। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लो ना। अच्छा मेरी शक्ल का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए तुमको? है नहीं जी, हार्डवुड हो या सैपवुड हो, फ्लोएम कहीं नहीं है मेरे बच्चों। फ्लोएम, फ्लोएम कहाँ है? फ्लोएम कहाँ है? फ्लोएम इसके बाहर पड़ा हुआ है, दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि वुड तो है ना। फ्लोएम इज नॉट वुड। तो मैं क्यों दिखाऊं? ना मैंने सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया, ना मैंने प्राइमरी फ्लोएम दिखाया, ना मैंने कॉर्टेक्स दिखाया, कुछ भी तो दिखाया। इसके बाद ये कैम्बियल रिंग है ना, दिस इज दी से दिस इज द कैम्बियल रिंग, ये वाला दिस इज द कैम्बियल रिंग, वैस्कुलर कैम्बियल। क्लियर? अब देखो फोटो दिखाती हूँ इसकी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रही। देखो हाउ ब्यूटीफुल। कहाँ है? हाउ ब्यूटीफुल सी। इसमें आपको ग्रोथ रिंग भी नजर आ रहे हैं, है ना। देखो ये कैम्बियम है, अरे ये कैम्बियम है, देखो ये कैम्बियम है ना, ये कैम्बियम है। तो कैम्बियम के बाहर सारी बार्क है, कैम्बियम के बाहर ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी बार्क है। कैम्बियम के अंदर पूरी वुड है। वुड में आपको एनुअल ग्रोथ रिंग देखने के लिए मिल रहा है। देखो दिस इज वन एनुअल ग्रोथ रिंग। इसमें आपको ये जो लाइट वाली है बेटा, ये जो लाइट वाली है, ये जो इसकी क्या बोलते हैं क्रीम कलर की, ये स्प्रिंग वुड है। एक मिनट। सेप्ट है आपका हार्डवुड और सैपवुड का।
दिस इज द कैम्बियल रिंग, वैस्कुलर कैम्बियल। ये हार्ट रूट के बाहर ये पूरी, दिस इज द कैम्बियल रिंग, वैस्कुलर कैम्बियल। क्लियर? अब देखो फोटो दिखाती हूँ इसकी, कहाँ है, ये देखो, हाउ ब्यूटीफुल सी। इसमें आपको ग्रोथ रिंग भी नजर आ रहे हैं, है ना? देखो ये कैम्बियम है, अरे ये कैम्बियम है, देखो ये कैम्बियम है ना, ये कैम्बियम है। तो कैम्बियम के बाहर सारी बार्क है, कैम्बियम के बाहर ये पूरी की पूरी बार्क है। कैम्बियम के अंदर पूरी वुड है। वुड में आपको एनुअल ग्रोथ रिंग देखने के लिए मिल रही है, देखो दिस इज वन एनुअल ग्रोथ रिंग। इसमें आपको ये जो लाइट वाली है बेटा, ये जो लाइट वाली है, ये स्प्रिंग वुड, जो इसकी क्या बोलते हैं, वो क्रीम कलर की है, ये स्प्रिंग वुड है। और ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये जो लाइन है, ऑटम ये जो लाइन, अरे नहीं, दिस लाइन ऑफ ब्लैक कलर, दिस इज ऑटम वुड। ठीक है, तो ये क्रीम कलर और ब्लैक वाली ये एक एनुअल ग्रोथ रिंग है। ऐसे आपको ग्रोथ रिंग्स नजर आ रहे हैं, और उनके अंदर फिर जब टैनिन और रेजिन भर गया बीच वाले एरिया में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कहाँ गया, हार्ट रूट। और ये जो बाहर बची है हार्ट रूट के बाहर, ये पूरी सैपवुड। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें कॉर्क कैम्बियम करा सकती हूँ, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो। अब मैं तुम्हें कॉर्क कैम्बियम करा सकती हूँ, बोलो। हाँ जी, ओके, नाउ we are done with something very important. We have done something very important. What have we done? We have done something important, vascular cambium. Now come to another type of secondary growth called cork cambium. अब तुम कॉर्क कैम्बियम का महत्व समझ पाओगे, बहुत आसान है। ये जितना झिकझिक था ना इसमें, उससे बहुत आसान है कॉर्क कैम्बियम। आओ देखते हैं। इसी डायग्राम पे हो। देखो मेरे बच्चों, दिस इज स्टेप 1 ऑफ व्हाट यू हैव डन। पहले होगा कॉर्क, इसका क्या कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पे वुड बनेगा, यहाँ पे सारी चीजें क्रश होंगी। अब स्टोरी का अगला भाग कुछ इस प्रकार से, देखो आई एम रबिंग एवरीथिंग ऑफ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई वांट टू रब एवरीथिंग ऑफ बिकॉज़ आई नीड टू टीच यू समथिंग इंपॉर्टेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। यस नाउ ओके। जब अंदर सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये सेकेंडरी जाइलम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बाहर के टिश्यूज पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम क्रश, प्राइमरी फ्लोएम क्रश, एंडोडर्मिस क्रश, कॉर्टेक्स क्रश्ड एंड एपिडर्मिस क्रश्ड, एवरीथिंग इज क्रश्ड। तो तुम्हें पता है जब भी इस दुनिया में पापियों का साम्राज्य होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं उनका विनाश करने के लिए। ऐसे तुमने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, जब भी तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाता है तभी विष्णु जी आते हैं तुम्हारा सर चक्कर से काटने के लिए। ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं ना, जो भी है समझ लो। मूवीज में हीरो की एंट्री करने के लिए भी डायलॉग यूज किया जाता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये टिश्यूज जब डिस्ट्रॉय हो गए तो प्लांट के पास प्रोटेक्शन के लिए कोई टिश्यू नहीं बचा। यार प्लांट किससे अपनी प्रोटेक्शन करेगा यार, तुमने सब कुछ तोड़ डाला, इससे बाहर वाली सारी चीज तोड़ डाली तुमने। तो क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जन्म लेता है, दिस इज कॉर्टेक्स। इसके अंदर एक नया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जन्म लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स में कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से, जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं। फ्यू लेयर्स मोटा होता है, ये फ्यू लेयर्स मोटा ऐसे। और ये बीड़ा उठाता है कि मैं इस प्लांट की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कॉर्टेक्स के अंदर नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उगा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम। अब ये जनरेट करेगा नए सेल्स, तो इसके नाम में जनरेट तो आना चाहिए क्योंकि नए सेल्स जनरेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे फेलोजेन। फेलोजेन, जेन मतलब जनरेट, तो जो जनरेट करेगा उसका नाम है फेलोजेन। अब ये भी क्या करेगा, इस वाले कैम्बियम की तरह अंदर भी सेल्स काटेगा बाहर भी सेल्स काटेगा, मतलब नए सेल्स बनाएगा, अंदर भी सेल्स बनाएगा बाहर भी सेल्स बनाएगा। तो जो अंदर सेल बनाता है, वो इस कॉर्टेक्स की रिप्लेसमेंट बनाता है, कहता है कॉर्टेक्स को यार मैंने तुम तो पहले बर्बाद हो गए, अब हमें एक नए कॉर्टेक्स की जरूरत है, एक नए कॉर्टेक्स की जरूरत है। तो यहाँ पे अंदर की साइड ये नए कॉर्टेक्स के सेल बनाने लगता है, जो कि पेरेंकाइमेटस होते हैं इस तरीके से, पेरेंकाइमेटस सेल्स बनाने लगता है। तो ये एक नया कॉर्टेक्स बन गया है ना, तो इसका नाम क्या रखेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि अब नया बना है, बाद में बना है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसका बहुत ही गंदा नाम है फेलोडर्म, कोई बात नहीं, याद करा दूंगी, चिंता मत करो, फेलोडर्म।
ये जो बच्चे मेरी टीचिंग का मजा ले रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि पूरा सिलेबस के मजे कहाँ पे लेने हैं, आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को भी इतने आसानी से यदि आप समझना चाहते हैं, आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, उन्हें लर्न करना चाहते हैं, सो यू कैन कम ऑन प्लस विद मी, ठीक है। यदि आप 2020 के लिए क्रैश कोर्स लगाना चाहते हैं, यू कैन कम ऑन प्लस। यदि आप 2021 के स्टूडेंट हैं, 22 के स्टूडेंट हैं, यू कैन कम ऑन प्लस। प्लस के सब्सक्रिप्शन से आपको मेरे साथ साथ 40 से भी ज्यादा टीचर एक्सपर्ट्स की क्लासेस मिलेंगी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और उन सबके लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उसी में आपके टेस्ट भी इंक्लूडेड है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। एक सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेने जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाएं, नीट की कैटेगरी पे चले जाएं, 1 या 2 साल जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है क्लिक करें, और ये कोड भरे अपना 10% बचाने के लिए फीस का मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड भरे हुए तू आपको 10% ऑफ हो जाएगा और अपनी क्लासेस से कनेक्ट हो जाएंगे। आइए देखिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन गया, लेकिन बाहर की साइड और ज्यादा तगड़े सेल चाहिए आपका। ऐसे पेरेंट, अच्छा ये पेरेंकाइमा सेल होते हैं आराम से, दिस इज पेरेंकाइमा, अंदर की साइड पेरेंकाइमा बना है क्योंकि यार इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं है ना, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करना है जो इस साइड सेल्स बनाएंगे, तो ये बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं बेटा। इट मेक्स स्पेशल हेक्सागोनल सेल्स व्हिच आर डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेड होते हैं, तुम्हें पता है जो भी ज्यादा स्ट्रांग होता है वो डेड होता है, सो दीस आर डेड सेल्स, बिल्कुल डेड सेल्स, वेरी स्ट्रांग, कॉल्ड कॉर्क सेल्स। दिस इज कॉल्ड कॉर्क सेल्स, और इनकी सेल वॉल के अंदर हमें एक मटेरियल मिलता है इसको बोलते हैं सुबेरिन, जो कि वाटरप्रूफ होता है, which makes the outer covering waterproof। नहीं तो लो जी बारिश पड़े गल जाए प्लांट बाहर से, फिर तो गलता क्यों नहीं है प्लांट। आप वैसे लकड़ी काटो पानी में फूल जाती है लकड़ी, है ना, लेकिन पेड़ कभी नहीं फूलता पानी में, है ना, जब बारिश आती है। क्यों? कॉर्क होता है बेटा बाहर, इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं कॉर्क। इट इज अ डेड टिश्यू, इट इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो शैंपेन की बॉटल, कहाँ मेरे बच्चे तो कहीं शैंपेन की बॉटल देखे शरीफ है ना, लेकिन शैंपेन की बॉटल के ऊपर जो ऐसे कॉर्क ढक्का होता है ना, उस पर लगता है, वो कॉर्क का बना होता है, ठीक है। डेड होते हैं, हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, और सुबेरिन इनकी सेल वॉल में मिलता है। दिस इज कॉर्क, आल्सो कॉल्ड फेलम। ये 3 नाम बहुत गंदे लग रहे हैं ना देखने में, फेलोजेन, फेलोडर्म और फेलोमेट। में याद करने का तरीका बताती हूँ, देखो ये तो याद हो जाएगा फेलोजेन, क्योंकि बेटा ये जनरेट कर रहा है बाकी 2 टिश्यूज को। ये भी याद हो जाएगा फेलम, ठीक है, क्योंकि ये फिल कर रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उसको फिल कर रहा है ना, जो इसी की तो जरूरत थी, इसी की तो जरूरत थी। और ये याद हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बहुत बड़ा नाम है और फेलोडर्म भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे आसान नहीं हुई है, क्योंकि तुमने मेडिकल ले लिया है। तो अभी एक और टर्म है, आओ 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 कभी हवेली पे। इन तीनों लेयर्स को मिला के, कॉर्क, कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क को मिला के एक नई टर्म का इजाद हुआ है जिसे बोलते हैं पेरिडर्म। तो जरा पेरिडर्म और फेलोडर्म में मत कंफ्यूज होना, बस तुम होगे भी नहीं। जो ये 3 बच्चे हैं ये फेलो फेलो हैं, है ना, फेलोजन, फेलोडर्म, फेलम, फेलो 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 डटी फेलो बफेलो फेलो फेलो फेलो, और तीनों मिला के पेरी पेरिडर्म कहलाते हैं। ये आपका कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी और कुछ नहीं है, जस्ट दिस, वेरी इजी। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट सेशन डन, नौटंकी बाज। First session completed, completed, completed. 2-minute break.
डू यू अंडरस्टैंड? ये देखो, मैं पागल, मैं बेवकूफ। क्यों भाई, तुम क्यों पागल, क्यों बेवकूफ? तुम्हारे अंदर भगवान का वास है, हर इंसान के अंदर भगवान का वास है। अपने आप को गाली दे रहे हो हैं? ऐसे बोलते हैं? शाश्वत भूषण मैम, आप कहाँ चली गई थी? अरे बेटा, मैं लॉकडाउन में ट्रैप हो गई थी, मुझे किसी ने आने नहीं दिया, कोटा में फंस गई थी मैं। क्रैश कोर्स की फीस, क्रैश कोर्स के लिए आप 3 महीने का कोर्स ले सकते हैं। 3 महीने की फीस मात्र 13,000 रुपए कुछ है, और उसमें से मेरा क्रैश कोर्स नहीं है भैया। जितना फैकल्टी वहाँ पढ़ा रहा है, टॉप फैकल्टी पढ़ा रहा है, उनमें से किसी का भी क्रैश कोर्स लगा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका। नॉर्मल का कोर्स भी लगा सकते हो, जितना मर्जी पढ़ो, 3 महीने के लिए फ्री हो तुम। ठीक है, आओ आओ। अच्छा, क्रैश कोर्स के लिए मैं तुम लोगों को बताती रहती हूँ। क्रैश कोर्स में हमेशा एनसीईआरटी पढ़ के आओगे, बिना एनसीईआरटी पढ़े मुझे कोई मुंह नहीं दिखाएगा क्रैश कोर्स में। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स बहुत फास्ट होता है। साथ में यदि तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता तो प्लस में मेरे रिकॉर्डेड चैप्टर्स पढ़े हुए हैं सारे के सारे, तो वहां से देखो रिकॉर्डेड चैप्टर, फिर क्रैश कोर्स लगाने हो। ठीक है, तो मतलब तुम वो भी देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों, ये बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। वुड ग्रो कर रही है, वुड ग्रो कर रही है, सेकेंडरी फ्लोएम पूरा क्रश, प्राइमरी फ्लोएम पूरा क्रश। ठीक है, अब यहाँ पे क्रश होती जा रही चीजें, लेकिन ये हमारा मसीहा बन गया है, जो कॉर्क वाला चीज है, ये बाहर से फूटने से कभी बचाता है, ये सपोर्ट करता है जो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ है। अब एक चीज, बस लास्ट चीज है, उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी। देखो, अब बेटा तुम्हें पता है कि हर टिश्यू प्लांट का अपने आप सांस लेता है। कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं कि कहीं से भैया ट्रैकिया आ रही है और सांस आ रहा है। अब दिक्कत ये होती है, कॉर्क से ना एयर नहीं अंदर आ पाती। अब यार अंदर वाला टिश्यू भी तो सांस लेगा ना। तो ये प्लांट बड़ा चालाक है, ये क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम कभी कभी बाहर थोड़े से पेरेन्काइमेटस सेल्स बना देता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स काट देता है यहाँ पे, देखो इस तरीके से। अरे यहाँ पे ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स बना देता है। अब भैया इतने प्रेशर में अगर पेरेन्काइमेटस सेल को रखोगे, दिस इज पेरेन्काइमा, कॉर्क का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पेरेन्काइमा का क्या होगा, इतना प्रेशर आया अंदर से, ये पेरेन्काइमा टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। यही हम चाहते थे। ये बेटा जी, ओ नो नो नो, ये यहाँ से पेरेन्काइमा प्रेशर में सारा टूट के यहाँ से ऐसे छेद बना देगा बेटा, ऐसे ओपनिंग बना देगा जहां से इजीली ऑक्सीजन अंदर आ सकेगी, गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। ये जो ओपनिंग बनी है ना इसके पेरेन्काइमेटस सेल टूटने से, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इसको? इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को कहते हैं लेंटी सेल। क्या कहते हैं? लेंटी सेल कहते हैं बेटा जी। दिस ओपनिंग हियर ड्यू टू कटिंग ऑफ ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स इज कॉल्ड लेंटी सेल। लेंटी सेल समझे हैं आप? थोड़ा सा आगे मैं आपको फोटो मैं बहुत सारी फोटोग्राफ्स लेके आई थी, कुछ भी नहीं दिखाया मैंने। अरे अभी छोड़ो इसको, लेंटी सेल लाई थी मैं दिखाने के लिए तुम्हें यार, कहाँ गए? अच्छा पहले तो कॉर्क दिखा देती हूँ। ये एक प्लांट है जिसका नाम है क्वेरकस सुबर, क्वेरकस सुबर। इसको कॉर्क प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि कमर्शियली कॉर्क इससे डिराइव होता है। कमर्शियली कॉर्क इससे डिराइव होता है। तो तुम देख रहा क्या, ये ऊपर वाला बार्क वाला पोर्शन उतार लेते हैं इसका। अब बार्क के अंदर तो कॉर्क भी है, ठीक है, ये अंदर तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम और वुड आ गई है, ये वुड है अंदर की साइड, ठीक है। तो ये बार्क पूरी छिलके की तरह उतार लेते हैं और इसी के अंदर कॉर्क भी होता है। ये बार्क है, बार्क के अंदर वाली साइड कॉर्क लगा हुआ होगा, उससे कमर्शियली हम यूज कर लेते हैं। एक तो ये डायग्राम लेके आई थी, एक ये डायग्राम लेके आई थी लेंटिसेल वाला। देखो लेंटिसेल बेटा, देखो पेड़ों पे जो अपन ये देखते हैं, कुछ पे ऐसे होते हैं कटे हुए, ऐसे छेद नजर आते हैं ना, ऐसे नजर आते हैं, कुछ में ऐसे नजर आते हैं। देखो आई शेप के, आंख की शेप के ऐसे नजर आते हैं, ये कट्स नजर आते हैं ऐसे करके। ये क्या है बेटा जी? ये लेंटिसेल है, एयर एक्सचेंज के लिए। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये कॉर्क सेल, कॉर्क कैम्बियम में ऊपर, पेरेन्काइमेटस सेल
काट दिए, पेरेन्काइमेटस सेल टूट गए, तो देखो यहाँ पे लेंटिस सेल खुल गया, लेंटिस सेल के नीचे जस्ट नीचे आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खत्म चैप्टर, क्या करना है अभी, क्या करना है, क्या करना है, ऑलमोस्ट हो गया, अच्छा हो गया हो गया हो गया। सेकेंडरी मेडुलरी रेज रह गया तुम्हारा, है ना, सेकेंडरी मेडुलरी रेज क्या होता है वो करेंगे एक बार, बाकी सब हो ही गया। फिर मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी, देखो लेंटिस सेल हो गया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज देख लो बेटा क्या होता है, बस इधर देखो, जहां वुड बनता है ना बेटा, यहाँ पे कभी पित्त था, पित्त में यहाँ पे कभी मेडुलरी रेज हुआ करती थी, वो अस्तगफिर फ्लोएम और की तरफ होगी ना, अस्तगफिरुल्लाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। God damn, you feel really traumatized, okay? Parenchymatous secondary cortex.
deposition of suberin. Phallogen. Phallogen. Gen. Phallogen. Phallogen. Cork, cambium. Cork, cambium. Phallogen, cork, cambium. Phylum. Cork, cambium. This is a parenchymatous secondary cortex. Parenchyma secondary cortex. Secondary cortex. This is a Phallogen, cork, cambium, secondary cortex. Secondary cortex. Secondary cortex. Okay. Plus phylloderm. Secondary cortex. They are parenchymatous. Meristematic. Cambium, cork, cambium. Cork, cambium. So, phylum. Phellem. Phylum. Cork. Dead. Hexagonal. Phylum. Dead. Here, hexagonal cell. Suberin. Impermeable to water. Parenchymatous. Parenchymatous. Lenticels. 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 Periderm. 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 Cambial ring. Cambial ring. Primary xylem. Primary xylem. Cambial ring, primary xylem. This is a secondary xylem. Xylem. तो सब खत्म हो गया है ना जब से वुड बनी है। तो बेटा ये वुड जो सारा डेड टिश्यू है इसके अंदर Secondary phloem. CCONDER. Secondary phloem. PHLOEM. Phloem.
3 layer. This is phylum, phylogen, and phylum, phylogen and phylloderm. Okay. Secondary cortex, parenchymatous, deposition of suberin. This is a phylum. Parenchymatous lenticels. These are used for cork, making cork, isn't it? Yeah, phylogen. Phylogen is making you. No. Phylum is used for making cork. Phylogen is cork cambium. Parenchymatous secondary cortex. Phylloderm. Parenchymatous secondary cortex. Phylloderm. Cork cambium. Phylogen. Okay. Parenchymatous periderm dental phylum. Cork dead hexagonal suberin deposition. Cortex. Secondary phloem. Secondary xylem. Cambial ring. Primary xylem. अंदर भी कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से, कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स ऐसे बन जाते हैं रेडियली ऐसे, ठीक है, कुछ पेरेंकाइमेटस सेल्स ऐसे रेडियली ऐसे से बन जाते हैं, ठीक है। ये पूरा जाइलम है ना, जाइलम तो डेड टिश्यू है ना, उसके अंदर भी बेटा बाद में कुछ यहाँ पे पेरेंकाइमा की ऐसे रेज निकलने लगती हैं जिसको सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। टॉपिक खत्म है, रूट पे चलेंगे अभी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, अब एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दो तुम्हें इतना समझने के बाद, है ना, हो गया ना सब कुछ, बोलो। Medullary veins. बोलो 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 बोलो, हाँ रूट पे चल रहे हैं, रूट पे चल रहे हैं, रूट पे चल रहे हैं मेरे बच्चों। अच्छा लीफ रह गया, लीफ अलग अलग चैप्टर में बनाऊंगी बेटा, अलग चैप्टर नहीं सॉरी अलग क्लास में बनाऊंगी, लीफ अलग क्लास में बनाऊंगी। आओ एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे, देखो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद प्राइमरी फ्लोएम, मतलब इन्होंने एंडोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं दिखाया है ना, पेरिसाइकिल भी नहीं दिखाया, सीधा कहा कि प्राइमरी फ्लोएम है ऊपर वाला, फिर बीच में ये वैस्कुलर कैम्बियम है ग्रीन कलर का, फिर अंदर ये यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है ना, और ये पिथ है, ये पहला है। फिर क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगी ऐसे, और पूरा कैम्बियल रिंग बन जाएगा, देखो बन गया, कैम्बियल रिंग बन गया। अब कैम्बियल रिंग ने अंदर क्या किया, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाना शुरू कर दिया। देखो देखो ये तुम्हारा प्राइमरी जाइलम है जो अंदर घुसा हुआ है, पिथ के पास प्राइमरी जाइलम घुसा हुआ है, ये ब्लू कलर का सेकेंडरी जाइलम है, इधर देखो सेकेंडरी जाइलम, ये तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम है, ये तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम है, देखो ये तुम्हारा अच्छा 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 ये तुम्हारा अच्छा ये तुम्हारा कैम्बियल रिंग, ये रहा, ये व्हाइट कलर का तुम्हारा कैम्बियल रिंग दिखाया हुआ है, और ये जो रेड कलर का है तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम नजर आ रहा है, ठीक है सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। उसके बाद तुम समझ रहे हो ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है ना, अभी ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कॉर्टेक्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय होएगा। अंत में आके देखो किस तरीके से हो गया, ये आपका प्राइमरी जाइलम अंदर चला गया, ये आपका सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है जी, ये आपका कैम्बियल रिंग है, कहाँ गया, ये देखो ये रहा कैम्बियल रिंग, ये कैम्बियल रिंग है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये बाकी की लेयर्स है। क्लियर है ये मेरी बात? और देखो ये मेडुलरी रेज जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, इस तरीके से सेकेंडरी मेडुलरी रेज,
रूट पे चले, स्टेम से मन भर गया हो तो रूट पे चले, बोलो 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 बोलो, स्टेम से मन भर गया, रूट पे चले। Yes, just nobody. आ जाओ, पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर बता रही हूँ। Aspirant. तुम भी हो क्या? If you are, then all the best. पेज नंबर 97 का जल्दी से। पेज नंबर 97 पे आ गए। चलिए, बस रूट सेम है, देखो मेरी बात सुनो, रूट सेम है, सिर्फ वैस्कुलर कैम्बियम अलग तरीके से बनेगा। सब कुछ सेम होगा रूट में, एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस पढ़ना है, फिर क्लास खत्म करते हैं। चलो, बहुत हो गया, सिर्फ एक डिफरेंस है। पहले रूट की फोटो बना लो अपनी कॉपी में, इससे पहले मैं बनाऊं। कॉपी खोलो, रूट की फोटो बनाओ। अभी कल ही सिखा के हटे हैं, कल परसों बनाइए। डाइकोट रूट देखिए, एपिडर्मिस रूट हेयर, एपिडर्मिस रूट हेयर, एपिडर्मिस रूट हेयर, एपिडर्मिस रूट हेयर, ट्राइकॉम की जगह रूट हेयर आ गया। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की कोई लेयर्स नहीं, ऐसा नहीं कि भाई एपिडर्मिस वगैरह कुछ नहीं। ये अपनी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स याद है। मेन फर्क आएगा अंदर, है ना, ये पेरिसाइकल। क्यों बच्चों, ये पेरिसाइकल इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर पेरिसाइकल, जो कि पेरेंकाइमा का बना हुआ है ना, रूट का पेरिसाइकल पेरेंकाइमा का बना होता है। स्क्लेरेंकाइमा का नहीं बना होता, स्टेम का स्क्लेरेंकाइमा क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए, रूट का पेरेंकाइमा क्योंकि यहाँ से लेटरल रूट्स निकलेंगे, है ना, दिस इज पेरिसाइकल। अब जो मेजर डिफरेंस है, जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होता है। जाइलम ऐसे पड़ा होता है, दिस इज जाइलम, क्योंकि रूट है ना, रूट में डर नहीं लगता ना, तो जाइलम फ्लोएम अपना खुला में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाइलम है, फ्लोएम बना लो, ये फ्लोएम है। पिथ बहुत छोटी, इनकॉन्स्पिकुअस पिथ याद आया, डायग्राम बोलो, इतना सिंपल डायग्राम याद आया, कल का डायग्राम याद आया, बोलो बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। चलो, अब देखो मेन पॉइंट क्या है, आओ मेन पॉइंट पे आओ, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पे आओ। यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, रूट स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम था, यहाँ कैम्बियम दिख रहा है कहीं पे, नहीं है ना, तो सारा का सारा कैम्बियम सब अभी शुरू से बनाना पड़ेगा, फ्रॉम द स्क्रैच बनाना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा कैम्बियम जो बनेगा वो सेकेंडरी नेचर है ना, क्योंकि पहले से तो कोई था नहीं, अगर जो पहले से होता है वो प्राइमरी कैम्बियम होता है, जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी होता है, तो यहाँ तो पहले से कुछ है ही नहीं। तो होता क्या है मेरे बच्चों, देखो अगर तुम्हें याद हो प्रोटोजाइलम यहाँ पे है, प्रोटोजाइलम यहाँ पे है, ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, फ्लोएम के नीचे वाले, फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर वाले, इसमें पेरिसाइकिल के भी कुछ सेल्स आ जाएंगे, फिर फ्लोएम के नीचे वाले मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर वाले जिसमें पेरिसाइकिल के भी सेल्स हैं, ऐसे नया ही अपने आप ही कैम्बियम बन रहे हैं लोग, जहां कभी कैम्बियम का नामो निशान ना था वहां पे कैम्बियम बन चुका है। इस तरीके से एक नया ही कैम्बियल रिंग बन जाता है। मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं, क्योंकि मेरे पास और कलर की चॉइसेस नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना, ये पूरा
एक नया ही कैम्बियम बन गया है, फ्लोएम के नीचे जाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे जाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल को लेते हुए, फ्लोएम के नीचे जाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल को लेते हुए एक नया ही रिंग बन गया है। दिस इज पूरा का पूरा सेकेंडरी कैम्बियम, जो कि वेवी इन नेचर है, वेवी इन नेचर है। करेगा वो ये भी वही काम, इस साइड को फ्लोएम बनाएगा, इस साइड को जाइलम बनाएगा, कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है मेरे बच्चों। इस साइड को जाइलम बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, और उस साइड को सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ कैम्बियल रिंग का डिफरेंस है। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया है? जल्दी से बोल दो। अरे क्लास खत्म करेंगे, बताओगे तो। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बनाएंगे, बनाएंगे, कोशिश चल रही है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। डन डन डन। देखो एनसीईआरटी से एक बार डायग्राम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेते हैं, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत छोटू छोटू सा नजर आया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे, अरे एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, है ना, प्राइमरी फ्लोएम, फिर कैम्बियल रिंग, ये देखो ये रहा कैम्बियल रिंग आपका, ये रहा कैम्बियल रिंग, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे करके डेवलप कर दिया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ये बहुत ही छोटे छोटे सा डायग्राम है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैंने समझाया वही ये दिया हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होगी और डाइकोट में होगी, मोनोकॉट के लिए कभी ट्रैप में मत गिर जाना। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया है, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है मुझसे, और बहुत कुछ सीखा है मैंने आपके कमेंट्स से। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, नेक्स्ट चैप्टर जो भी करेंगे, अच्छा मैं ये सोच रही हूँ प्लांट किंगडम ले लिया जाए नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो बोलो। प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लिया जाए, और ह्यूमन हेल्थ देख लेंगे उसके बाद। लेटरल रूट पेरिसाइकिल से निकलते हैं बेटा, जो पेरिसाइकिल होता है ना रूट के अंदर, वो पेरेंकाइमेटस होता है, वहां से लेटरल रूट निकलती है, ठीक है। चलिए चलो, वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छी लगी है तो, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों भाई बंधुओं को बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा एक और चीज, जिनको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में डिफिकल्टी है या कोई क्वेरी करना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, आप कॉल मत कीजिए, 9874268111। मेरी टीम से कोई ना कोई आपका कॉल पिक करेगा या आपका मैसेज रिसीव करेगा। आप यदि प्लस क्वेरी है आपके पास, आप मैसेज डालिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, यदि आपको इन चीजों की पीडीएफ चाहिए तो। टेलीग्राम पे आप कैसे ज्वाइन करेंगे? @ऋतु लाइव पे ज्वाइन कीजिए, हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेट्स क्रैक नीच, ठीक है जी। ये नंबर नोट कर लीजिए, प्लस की क्वेरीज होने पे आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, बाय बाय। एक टेस्ट कर लेते हैं, हमारा बहुत दिन हो गया, बाय बाय, आई सी यू। टेम्परेचर 1 year. Annular growth ring, Cork cambium, vascular cambium. Secondary growth, Cork cambium, vascular cambium. The activity of vascular cambium. Okay. Cortex, hypodermis, collenchymatous, cortical layer, parenchymatous. Cortical layer, parenchymatous, and endodermis. Endodermis, starch sheath. Parenchymatous, thin-walled cortical layer, trichome. Hypodermis, strength, collenchymatous. Medullary rays, pith. Okay. Secondary growth of phloem. Secondary phloem. Cambium or intrafascicular cambium. Primary in origin. In interfascicular cambium, secondary in origin. Interfascicular cambium, secondary origin, lateral formed. Medullary rays differentiation,
different D differentiation, medullary rays D differentiation to cambium ring. Medullary rays D differentiate into cambium ring. Medullary rays D differentiate into interfascicular cambium to form cambium ring. Cambial ring. Primary xylem shifts towards pith. From pericycle to pith. Endodermis देखिए भित्रको चाहिँ steel. Pericycle to pith. Pericycle vascular cambium. Pith. Semilunar patches of pericycle. Semilunar patches of pericycle in dicot stem. Dicot stem मा semilunar patches हुन्छ. Okay. Sclerenchymatous pericycle. Sclerenchymatous. Hypodermis strength collenchymatous. Epidermis trichomes. Parenchymatous thin-walled cortical layer. Starch sheath endodermis. Pericycle semilunar patches pericycle. Sclerenchyma formation of new cells secondary xylem. I'll eat rice. Slot 2 completed.
Though there is 1 minute and 17 seconds, but we will not take break, okay? We will study. Intravascular. Vascular cambium primary origin. Primary xylem shift towards with cambial ring. Into cambial ring. Secondary origin later formed, okay? Formation of new cells. Secondary xylem. Cambium. Starch sheath endodermis. Pericycle semilunar patches, okay? Trichome. Epidermis. This is endodermis, and the semilunar patches, scleron gymatus. Starts with endodermis. These are trichomes. Strength, colon gymatus, okay? Medullary rays with cortex. Endodermis starts with Hi Howard, hi Ayush, good morning. Let's talk in break, okay? Let's study for now. Cambial ring. Primary xylem primitive. Inside pith, primary xylem. Inside pith. Then we have secondary xylem, newly formed. Cambium, cambial ring or cambium. Then we have secondary phloem. Crosses primary phloem, okay? Secondary phloem, which crosses primary phloem, which causes crushes primary phloem. This is a vascular cambium. Vascular cambium.
xylem, primary xylem towards pith. Okay, then we have secondary xylem, wood, primary xylem, secondary xylem. Secondary xylem is basically wood. Secondary xylem, primary xylem, secondary xylem, wood, primary phloem. Okay, secondary phloem, primary phloem, endodermis. Then cortical layer and endodermis, cortex. Everything crushes by secondary xylem, okay, and secondary phloem. Cambial ring. Secondary xylem is more than secondary phloem, okay. Secondary xylem will crush everything outside cambial ring. And secondary phloem, okay. Secondary xylem is wood. Secondary xylem, wood. Secondary xylem is more than secondary phloem. Secondary xylem will crush everything outside cambial ring. Secondary xylem is wood. Secondary xylem की wood. Okay. Spring wood and autumn wood. Spring wood and autumn wood. Okay. Temperate resin, not tropical resin. Temperate resin. Cambial ring. This is the autumn wood. This is the spring wood. Spring wood, light in color, broad vessels. Spring wood, light in color, broad vessels. Autumn wood, dark, narrow vessels. Autumn wood, dark and narrow vessels. Autumn wood, dark and narrow vessels. After 1 year, formation of annual ring, annual growth ring, annual growth ring. Formation of annual growth ring. Xylem. This is a xylem. Spring wood and autumn wood. Next is spring wood, autumn wood. Cambial ring or cambium ring. Autumn wood of next year. Autumn wood first year. Spring wood first year. Cambial ring. Spring wood of next year. Annular growth ring. Annular growth ring. One growth ring is equals to one light plus one dark ring. One light plus one dark ring. Light spring wood, dark autumn wood. Autumn wood. Cambial ring. Vascular cambium is same. Cambial ring, vascular cambium is same. Cambial ring. Cambial ring, vascular cambium is same. Cambial ring, vascular cambium is same.
Phloem is not wood, xylem is wood, okay. Springwood, autumnwood, sapwood, and inside sapwood. On the outside one is sapwood, inside one is hardwood. Hardwood. Resins, tannins, gums will not conduct water, resistant to insect. Hardwood. Resins, tannins, gum will not conduct water, resistant to insect. These are hardwood. Autumnwood, springwood, cambium, bark. Sapwood does not accumulate anything, transport water and minerals. Does not accumulate anything, transport water and minerals. That is sapwood. Hardwood do not conduct water. Deposition of tannins, resins, and deposition of tannin, resins, and gums. This is a vascular cambium. This is a vascular cambium. We have cork cambium. Cork cambium. Primary xylem. Pith, primary xylem. Secondary xylem. Cambial ring. Primary xylem, secondary xylem, cambial ring. Okay, secondary xylem is wood, okay, hood. Secondary xylem. Cambial ring. Then we have primary phloem and secondary phloem. Secondary phloem first, then primary phloem. Inside out kara secondary phloem, primary phloem, which will ultimately get crushed. Then we have pericycle and then endodermis. Right? What is it? Endodermis, this one. Cortex. Cortex, okay. Everything's get crushed. Secondary phloem, primary phloem. Pericycle, endodermis, cortical layer, endodermis. Then we have cortical layer. We have parenchymatous, starch sheath. That is endodermis, starch sheath. Okay, endodermis. Then we have cortical layer and hypodermis. Hypodermis is collenchymatous. And then sclerenchymatous, pericycle, semilunar patches. Sclerenchymatous, semilunar patches, starch sheath, endodermis. Starch sheath, endodermis. Here also endodermis, starch sheath, pericycle, semilunar. Everything gets crushed. Phellozen, Cork cambium. Phellozen. Cork cambium is phellozen. They generate new cells. Outside they have phyleme, which is used as cork in champagne bottle. Secondary cortex is parenchymatous. Okay, secondary cortex parenchymatous, which is also known as phelloderm. Phelloderm, parenchymatous, secondary cortex. Phellozen, cork cambium, parenchymatous lenticels. Okay, parenchymatous lenticels for gaseous exchange. Lenticels for gaseous exchange. Phyleme, dead used as cork, hexagonal cell with deposition of suberin. Hexagonal cell with suberin deposition. Hexagonal cell with suberin deposition. Periderm. Periderm consists of outside phyleme, phellozen, and phelloderm. Periderm, 3-layer. These are cortex, okay. Periderm, 3-layer, phyleme, dead used as cork, hexagonal cell with suberin deposition, parenchymatous lenticels. Phellozen, meristematic cork cambium. Phellozen, meristematic cork cambium, okay. Phellozen, meristematic cork cambium. Secondary cortex, phelloderm, secondary cortex. These are secondary cortex. Phelloderm, parenchymatous. Cambial ring, secondary xylem, primary xylem. Secondary phloem, primary phloem. Medullary rays develop from secondary xylem.
medullary rays develop from secondary xylem. Okay, dicot root, secondary growth in root, secondary growth. Epidermis, root hairs, pericycle, lateral roots generate. Lateral roots generate from pericycle. Lateral roots generate from pericycle. Epidermis, root hairs, endodermis, pericycle, lateral roots generate. Inconspicuous. Pitch नहीं है, pith है. Pith. Secondary cambium wavy. These are secondary cambium. Secondary origin. Okay. Secondary origin. Xylem, phloem, wavy. Secondary cambium wavy. Secondary origin. These are cortex. Okay. Secondary growth. Anatomy of flowering plants. Study of internal structure of plant is called anatomy. Internal structure of plant is called anatomy. Cell, tissues, tissue system, ground tissue, vascular tissue, and epidermal tissue system. Ground tissue system, ground tissue, epidermal tissue, and vascular tissue system. Okay. Tissue, meristematic and permanent. Cells, tissue, meristematic and permanent. Meristem, okay, tissue system, organ, leaf, root, stem. These are organ. Then we have organ system, root system, and shoot system. Then finally plants. Okay, organs, leaf, stem, root, flower. Leaf, stem, roots, and flower. Leaf, stem, root, and flower. Tissue, same type of cells, same origin and same function. Same type of cell, same origin and same function. Meristematic tissue, primary meristematic and secondary meristematic. Okay, meristematic tissue, primary meristematic and secondary meristematic. Primary from beginning. Okay, these are apical meristematic, root apical and shoot apical meristem. Shoot and root apical meristem. Okay, then we have axillary bird and intercalary meristem in grasses. Shoot and root apical meristem, shoot and root apical meristem, shoot and root apical meristem. Primary meristematic tissues are of two types, primary meristem and secondary meristem. Primary meristem, root apical, shoot apical. Root apical meristem, shoot apical meristem. These are apical meristem. Then we have intercalary and axillary. Axillary meristem and intercalary meristem. Axillary birds and intercalary meristem. These are also primary meristem. Intercalary meristem is found in grasses. Intercalary meristem is found in grasses. Okay, they are responsible for primary growth. Secondary meristematic, primary meristematic tissue. Okay, secondary meristematic tissue or oh my goodness, you forgot. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या जाना था, लेटरल, इसको नाम हो लेटरल मेरिस्टेमेटिक और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक. Secondary meristem, also called cylindrical or lateral meristem, formed later on from permanent tissue. Formed later on from
permanent tissue. Secondary growth, cork cambium, vascular cambium. Okay, they are responsible for secondary growth. Cork cambium. Bark mounts you. Cortex form ganinsa, vascular cambium, wood form guts. Okay. Formed later on from permanent tissue. Formed later on from permanent tissue. Permanent tissue bada padma ganinsa. Okay. Cork cambium and vascular cambium. Secondary meristem, always cylindrical, lateral or cylindrical. Okay, meristem differentiate into permanent tissue. When permanent tissue de-differentiate into meristematic tissue. Meristem differentiate permanent tissue, de-differentiation radiant plant. Again, meristematic. Meristematic tissue undergo mitosis, mature permanent. Okay, mature permanent and perform their own function. Elongation, maturation, differentiation, no mitosis, specific function. Okay, meristematic tissue undergoes mitosis, cell elongation. Elongation, after elongation, maturation, differentiation. Okay, elongation, maturation, differentiation. They have specific function, no mitosis, no further mitosis. Root apical, permanent tissue, axillary bird, root apical. This is shoot apical, root apical meristem. Permanent tissue, axillary bird. Okay. Sclerenchyma, dead cells. Sclerenchyma, dead cells. Sclerenchyma, dead cells. There is cell wall, primary. Cellulose, hemicellulose, and pectose or pectin. Same cellulose, hemicellulose, and pectin. Cell wall, primary. Primary cell wall, hemicellulose, cellulose, and pectin. Secondary cell wall, lignin, strong. Secondary cell wall, lignin, they are very strong. Provide strength. Sclerenchyma provide strength. Cell membrane, okay, dead cell. Sclerenchyma, dead cell. Primary cell, cellulose, hemicellulose, and pectin. Then we have secondary cell wall, that is lignified. Deposition of lignin. Secondary cell wall, secondary cell wall, secondary cell wall, lignin, strong, provide strength. Cell membrane, okay, dead cell. Permanent tissue, simple, one type of cell. Okay, permanent tissue, simple and compound. Sorry, complex. Simple and complex tissue. Simple tissue and complex tissue. Primary tissue, simple and complex. Simple tissue and complex tissue. Simple, there are three types. Only one type of cell. Simple tissue, only one type of cell. Parenchymatous, collenchymatous, and sclerenchymatous. Simple tissue, one type of cells. Okay, parenchyma. Maximum plant body photosynthesis they undergo photosynthesis. Mesophyll on leaf, mesophyll on leaf. Okay, collenchyma, strength, provide strength to young parts like stem. Sclerenchyma, strength, dead cells. Okay, complex tissue, many type of cells, xylem and phloem. Okay, majority of the plant body, they are parenchymatous. Even they are the mesophyll cells. Mesophyll cells on leaves. Okay, photosynthesis. Mesophyll cells on leaves. Collenchymatous, provide strength to young stem. Sclerenchymatous, dead, provide strength. Photosynthesis. Mesophyll on leaves. Maximum plant body. Xylem and phloem. Many type of cell. Complex tissue. Many type of cells. Simple, one type of cell. Complex and simple. Parenchyma. Isodiametric, spherical, oval, round, polygonal, and elongated with intracellular spaces. Thin cell wall, primary cell wall made up of cellulose. Primary cell wall made up of cellulose. Living tissues. These are living tissues. Photosynthesis, storage, and secretion. Intracellular space present. Parenchyma, isodiametric, spherical, oval, round, polygonal, elongated. Thin cell wall made up of cellulose. Primary cell wall made up of cellulose. Living tissues. Parenchymatous are living tissue. They are living cells or living tissues. Photosynthesis, storage, and secretion. Photosynthesis, storage, and secretion.
Intracellular space is present. Collenchyma. They are also living tissue. Corners are thickened due to the deposition of hemicellulose, cellulose, and pectin. Okay. Oval, spherical, or polygonal. Oval, spherical, or polygonal. Living tissue. Corners are thickened due to deposition of cellulose, hemicellulose, and pectin. Oval, spherical, polygonal. Can do photosynthesis if the chloroplast present. Living tissue cornered are thickened due to the deposition of cellulose, hemicellulose, and pectin. Oval, spherical, and polygonal. Oval, spherical, and polygonal can do photosynthesis if they contain chloroplast. Provide mechanical support to growing parts of plant. Example, young stem. No intercellular space. There is no intercellular space in collenchyma, though they are living cells. Primary cell wall, just cellulose. Cytoplasm, vacuole, no intracellular space. Okay, cytoplasm and vacuole. Okay, sclerenchyma, dead tissue without protoplast. Provide mechanical strength. Lignified cell wall with few or numerous pits. With few or numerous pits. Secondary cell wall. Okay, secondary cell wall, lignified cell wall with few or numerous pits. Secondary cell wall found in fruit wall of nuts. Found in fruit wall of nuts, guava, pear, and sapota, tea leaves, etc. Seed coat of legumes and seed coat of legumes and leaves of tea. Found in fruit wall of nuts, guava, fruit pulp of guava, pear, and sapota. Guava, pear, and sapota. Seed wall of legumes and tea leaves. Fiber, sclerids, fiber and sclerid. Pits, secondary cell wall, primary cell wall. Okay, they have primary cell wall and secondary cell wall, lignified. Complex tissue, xylem, unidirectional movement from root to shoot. Phloem, leaf to, even root and shoot both bidirectional. Xylem, unidirectional movement. Phloem, bidirectional movement. Unidirectional movement and bidirectional movement. Xylem on uni, bi, phloem. Okay. Ground tissue, cortex. These are epidermis, root hairs. Okay. Epidermis, root hairs absorb water and minerals. Then we have ground tissue, cortex, xylem patches and phloem patches. These are xylem, transport water and strength, provide strength. Xylem, transport water and provide strength. There is phloem. Okay, xylem and phloem. These are root. Okay. Vascular tissue system, xylem and phloem. Vascular tissue system, xylem and phloem. Complex permanent tissue. Complex permanent tissue. These are complex permanent tissue. Vascular tissue, xylem and phloem. Answer. Complex permanent tissue. Complex permanent tissue. Xylem mostly dead. Okay, xylem mostly dead. Conducting tissue for water and minerals from roots to stem and leaves. Mechanical strength to plant parts. Xylem conduct water. They transport water and minerals from root to stem, leaves, and other body parts. Mechanical strength. Provide mechanical strength to plant parts. Okay. Xylem vessels, tracheids, xylem fiber, xylem parenchyma. Tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma. Xylem parenchyma. A xylem fiber only for strength. Xylem fibers are along with vessels and tracheids. They are for strength. Only for strength. Xylem, okay? Tracheids. Small diameter, but it also transport water. Small diameter, but it also transport water. Tracheids. Small diameter, but it also transport water. Vessels.
Major water transport. Xylem parenchyma, radial conduction of water. Okay. Vessels, tracheids, and xylem parenchyma conduct water, but fibers do not conduct water. They are only there for strength. Xylem parenchyma, radial conduction of water. Xylem parenchyma, radial conduction of water. Major water transport. Vessels, trachea, small diameter, but it also transport water. Dead without protoplasm, both vessels and tracheids and fiber, all of them are dead except parenchyma. Pits, tracheids, and vessels. Pits. Lignified cell wall, secondary cell wall dead, first strength. Okay. Sidewise water transport, tracheids, sidewise water transport, pits. Closed tapering end. They have closed tapering end. Tracheids have closed tapering end. Pits. Sidewise water conduction. These are vessels. Okay. Gymnosperm. Lack vessels in their xylem. No sieve tube and companion cells in their phloem. Angiosperm. Dicotyl and monocotyl. There's no vessels, only tracheids are present. No vessels in their xylem. No sieve tube and companion cell. Albuminous cell. And no sieve tube and slot 3 over. I'm kinda sleepy. I slept for 1, 2, 3, 4. I slept for 4 hours. So I'm kinda sleepy. This is our third slot, right? Slot 3 completed. We'll take a break. Break of 10 minutes. This break is kinda longer, but I can't help. I'm kinda sleepy now. We are taking a break of 10 minutes. कुछ सोच के तो होगा ने ये प्यार भी तो होगा ने
I'll make coffee and then I'll come back, okay? We still have 7 minutes left. I will never fall in love again. I found you.
Oh, we still have 1 minute and 50 seconds. Nice. Why nobody is speaking? There's nothing in the chat. It's empty. बोलो भैया बोलो. ओके मैं टाइप कर लेती हूँ ना. ये कौन सा स्लॉट है? स्लॉट 4 राइट. SLOT slot 4. 30-minute begins. Hi Dave. Begins. No chats. Okay, who is it? Ayo, you don't have to say cutie. We'll study for next 30 minutes, okay? The break will be over within 34 seconds, yeah. Stop it. Break is over. Break is over. Let me set the time for 30 minutes. La la. Change your spoon diaper and monocut. No flame pattern kaima. I'm starting the timer, okay? If you want to study with us, you can study. No fluid pattern kaima. And just diaper. And just monocut. No fluid pattern kaima. No sieve cells. No sieve tube element. No companion cell. Vessels dead. Absent angiosperm. Broad lumen. Multicellular. Vessels. Absent angiosperm. Dragons. Dead. Present angiosperm. Deep brilliant. Fiber. Dead. Highly tainted. Obliterated central. Obliterated central lumen. Fibers are also dead. Their lumens are obliterated, completely wiped out. They are only for strength. They do not conduct water. They are highly thickened. They can be septate or aseptate. Highly thickened. They can be septate or aseptate. Vessels are multicellular. They are dead. Absent in gymnosperm. Broad lumen. Tracheids present in gymnosperm. Tapering and fibers dead. Highly thickened. Septate or aseptate. Obliterated. Central lumen. Concealed. Wipe out. खत्म हो जाना. Okay. Parenchyma. Live. Thin wall of cellulose. Store fats, starch, tannins. Radial conduction of water. Thin wall of cellulose stores fats, starch, tannins. Radial conduction of water. Thin wall of cellulose stores fat, starch, tannins. Radial conduction of water. Astaghfirullah, you don't have to think about it. It's okay, ma. Parenchyma, life. They have thin wall of cellulose.
stores fats, starch, tannins. Fats, starch, tannins. Radial conduction of water. Parenchyma. Xylem parenchyma. Radial conduction of water. Radial conduction of water. Parenchyma. Life. The thin wall of cellulose stores fats, starch, tannins. Radial conduction of water. They are there for radial conduction of water. Xylem parenchyma. Phloem mostly living. Xylem mostly dead. Okay. Transport food from leaves to other parts of the plant. Transport food from leaves to other parts of the plants. Transport food from leaves to other parts of plant. Gymnosperm have albuminous cell and sieve cell. Gymnosperm have albuminous cell and sieve cells in place of sieve tube element and companion cell. Albuminous cell and sieve cells. Okay. Bidirectional movement of sucrose. Glucose breakdown into sucrose. This sucrose, bidirectional movement of sucrose. Phloem parenchyma. Phloem fiber or bast fiber. Sieve plate. There's a peripheral cytoplasm. Peripheral cytoplasm, so they are living. These are companion cells. Do not participate in companion cell. Do not participate in transport. Nucleus controls. The nucleus of companion cell controls both sieve tube and companion cell. Sieve tube element and companion cell. Glucose to sucrose. Bidirectional movement of sucrose. Peripheral cytoplasm. Sieve tube element alive. Transport. Okay, sieve tube element alive. Transport. No nucleus. There is no nucleus in sieve tube element. Companion cell do not participate in transport. Nucleus controls both sieve tube element and companion cell. Sieve tube. Bast fiber. Jute. Sieve plate. These are sieve plate. Phloem fiber or bast fibers. Phloem parenchyma. Three tissue system: epidermal, ground and vascular. Epidermal, ground and vascular tissue system. Okay. Trichome, multicellular. Even vessels are multicellular, right? Trichomes, multicellular, protects stomata from direct sun. Trichomes are multicellular, protects stomata from direct sun. Epidermal cells, epidermis layer, stem. Water vapor, the stomata transpiration, water vapor. Okay, stomata for transpiration. Cuticle, thick cuticle, waxy. Okay, waxy cuticle. Okay, waxy substances, wax, thick wax deposition. Cuticles are present to avoid excess transpiration. Stomata is present for transpiration, water vapor. Okay, we have trichomes. Trichomes are multicellular and they covers stomata, protects stomata from direct sun. We have epidermal cells, epidermis layer. Okay, then we have roots. No stomata and no trichome. Obviously, trichome is not needed since they don't have, the roots are not exposed to sun, and trichomes are only there to protect the stomata from sun. Okay, no stomata and no trichome. These are roots. Root hairs are present for absorption. Then we have epiblemma. No cuticles. Okay, in
outside epidermis there is thick cuticle. In stem, outside epidermis there is thick waxy cuticle. In roots, cuticles are absent. Exchange of gases, direct cells. Okay, cells are used for exchange of gases, O2 and CO2. Okay, so O2 to CO2. Cells are used. Ground tissue and vascular tissue. Trichomes. This is stem here or something like that. Epidermis, epidermal tissue system, ground tissue system, cortex and everything. Cortex to recycle, even teeth. Vascular tissue system. We have vascular tissue system, xylem and phloem. Roots. Root hair, vascular tissue system, xylem and phloem. Okay. Epidermal tissue system, epidermis, stem and roots. Multicellular trichomes, unicellular root hairs for absorption. Okay. Root hairs are unicellular, trichomes are multicellular. Root hairs are unicellular, trichomes are multicellular. Multicellular trichomes, unicellular root hairs for absorption. No cuticles, no stomata in root epidermis. Unicellular root hairs, no cuticles, and no stomata. Multicellular trichomes, secretory. Okay, these are secretory. Epidermis, secretory, deflect sunlight. Cuticle to prevent water loss. Cuticles are there to prevent water loss. Waxy cuticles to prevent water loss. Deflect sunlight. Stem epidermis. Deflect sunlight. Multicellular trichome. Deflect sunlight. Secretory. They are secretory. Stomata. Leaf and stem. Duita mancha stomata ko main presence comes stomata mancha ani stem hapani. Stomata. Gas. Stomata is there for gaseous exchange. Gaseous exchange. Okay. We have guard cell. Turgid guard cell, flaccid guard cell. Turgid guard cell, kidney or bean shaped generally. Okay, these are radially arranged cellulose fiber. There are radially arranged cellulose fiber in guard cell. Chloroplasts are present. Stomatal aperture. There is stomatal aperture. What is it? Stomatal aperture. Astaghfirullah. Water and keyless. Guard cell, stomatal aperture, chloroplasts are present, radially arranged cellulose fiber, subsidiary cell. Okay, they can be turgid or flaccid. Stomatal apparatus includes subsidiary, guard cell, and stomatal aperture. Subsidiary cell. Okay, subsidiary cell, stomatal aperture, guard cell, radial fiber of radially arranged cellulose fiber. Radially arranged cellulose fiber. Radially arranged cellulose fiber. Grasses. Dumbbell shaped guard cells. In grasses there are dumbbell shaped guard cells. Guard cell कस्तो हुन्छ? Usually bean shaped हुन्छ, तर grasses मा कस्तो हुन्छ? Dumbbell shaped. Bean shaped, okay? Dumbbell shaped. Organ, leaf. Leaf, okay? Dicot, dorsiventral. Monocot, isobilateral. Dorsiventral leaf. Both the surfaces are not safe. Dorsiventral, isobilateral. Both the surfaces are same. Okay, we have adaxial and abaxial surface. Adaxial surface and abaxial surface. Palisade mesophil. Palisade mesophil and spongy mesophils. Both palisade and spongy are parenchymatous cell. Epidermal cell, adaxial, abaxial. Epidermal cell. Epidermal cell, okay? Parenchymatous. Palisade, spongy. Palisade mesophils. Palisade, parenchyma, spongy. Mesophil. Palisade, mesophil and spongy mesophils.
Stomata for gaseous exchange in abaxial. In abaxial site, stomata are present for gaseous exchange. Okay. Monocot, isobilateral, adaxial surface and abaxial surface. Stomata present in both the surface, adaxial and abaxial. Okay. Both surfaces are same. They have midrib. Spongy and spongy down above palisade parenchyma. There's a mesophils. Okay. Abaxial do not have any stomata. Adaxial do not have any stomata. Abaxial have stomata in dorsiventral root. Leaf. Dorsiventral leaf. Isobilateral. Okay. Only in grass, flaccid bulliform cell. Adaxial surface and abaxial surface. Bulliform cells, they are colorless in grasses only. Okay, bulliform cells are in grasses. Colorless cells, turgid in presence of water, present in adaxial surface. And large cells, bulliform cells are large cells present only in adaxial side. Present only in adaxial surface. They are large cell, turgid in presence of water. They are colorless. Bulliform cells. These are present only in grasses. They are large cell. They are colorless. Present with vene. Present with adaxial surface. Okay. Present in adaxial surface. Bulliform cells, colorless cells, turgid in presence of water. Present in adaxial surface. Large cells. Okay. Leaf curl in absence of water. Protects from excess water loss. Astaghfirullah. Leaf curls in absence of water. Protects from excess water loss. Only in grass. Flaccid bulliform cells. Leaf curl in absence of water. Protects from excess water loss. Bulliform cells. Protects from excess water loss. Adaxial surface. Bulliform cells. Colorless. Large cells. Turgid in presence of water. Adaxial surface. Okay. Abaxial surface. Leaf in grasses. The vascular tissue. Okay. The vascular tissue system. We have the vascular tissue system, stem and root. Okay. Trick. Stem में tissue रहते हैं. Okay. These are conjoined bundle. We have conjoined and radial. Conjoined. Stem में xylem रहते हैं. Stem में tissues रहते हैं. These are xylem bundle and these are phloem bundle. Radial vascular bundle. Xylem and phloems are at different radii. Radial vascular bundle. Xylem and phloems are at different radii. Radial vascular bundle. Xylem and phloems are at different radii. These are stem. These are root. Monocot and dicot stem. Xylem, phloem. Okay. Conjoined. Xylem and then phloem. Stem. Monocot vascular bundle. Okay. Monocot and dicot stem. Then we have roots. Okay. Monocot, dicot. Monocot में no secondary growth, no cambium, conjoined, closed. Closed vascular bundle. Stem of monocot do not undergo secondary growth. Therefore, they do not have any cambium between the two vascular tissue, xylem and phloem. No cambium, closed, conjoined. Okay. Dicot, secondary growth. Conjoined open vascular bundle, phloem, cambium and xylem. Intravascular cambium, meristem. Intravascular cambium, meristem. Intravascular cambium or meristem. Okay, secondary growth. Conjoined open vascular bundle, secondary growth. Conjoined open vascular bundle. Open. Protoxylem. पहला बनने को मेटाxylem.
बाद में मानने को प्रोटोजाइलम first formed, metaxylem later formed. Okay, in stem enlarged condition, protoxylem inside, then outside metaxylem. Xylem, phloem. Xylem, this is conjoined closed monocot xylem stem. Phloem, cambium, xylem. Okay, protoxylem and then metaxylem, cambium. Protoxylem, metaxylem, cambium. These are enlarged condition in stem. Enlarged condition in stem protection. Protoxylem, then metaxylem, then cambium, then phloem. Okay. Conjoined close, conjoined open. In roots, exarch condition. Okay. Protoxylem outside, metaxylem inside. Protoxylem outside, metaxylem inside. Xylem bundle. Root, radial arrangement of vascular bundle. Radial arrangement of vascular bundle. Dicot root. Root hairs. These are root hairs, okay? What are these? Okay. These are the root curvature. Root hairs. Then we have phloem bundle, cortex, epidermis. Root hairs unicellular, epidermis. Then we have cortex, parenchymatous. Cortex, parenchymatous. Epidermis, cortex, root hairs. Then we have endodermis, barrel-shaped cell. Dicot roots, endodermis, barrel-shaped cell. Barrel-shaped cells. Inner layer of cortex, single layer, checkpoint. Casparian strip of suberin. Casparian strip of suberin. Casparian strips of suberin act as checkpoint. Impervious to water and toxins present in water. Impervious to water and toxins present in water and toxin present in water. Okay. Root hairs, epidermis, cortex, endodermis, barrel-shaped cells. Dicot root, barrel-shaped cells in endodermis. Endodermis, barrel-shaped cells. Okay, endodermis, barrel-shaped cells. Barrel-shaped cells. Inner layer of cortex, single layer. Endodermis, barrel-shaped cell. Barrel-shaped cell, inner layer of cortex, single layer. Casparian strips act as checkpoint. Do not let the water pass. Okay. Inner layer of cortex, single layer, checkpoint. Casparian strip of suberin. Casparian strip of suberin. Casparian strip of suberin. Casparian strip of suberin. Endodermis. Then we have inconspicuous pith in dicot root. Inconspicuous pith. Inconspicuous pith. Xylem bundle. Pericycle parenchyma. Generation of lateral roots. Lateral roots are generated from pericycle, which is parenchymatous. Pericycle parenchymatous. Generation of lateral roots. H2O एपोप्लास्ट पाथवेबाट पस्न सक्दैन. Casparian strip. Casparian strip impervious to water. Deposition of suberin. Casparian strip. Endodermis. Pericycle parenchymatous. Generation of lateral roots. Generation of lateral roots. Conspicuous pith. Still. Endodermis to pith. Pericycle. Pericycle. Pith. Monocot. Root hairs. Epiblema. Cortex. Then we have pericycle. Phloem. Xylem.
Conspicuous pith, polyarc xylem, more than 6 xylem, okay, polyarc condition, monocot root, polyarc condition, more than 6 xylem, conspicuous pith, polyarc xylem, barrel shaped endodermis, barrel shaped cells are there in endodermis. Casparian stripes forms inner layer of cortex, forms Casparian strip of suberin. Generation of lateral roots. Lateral roots are generated from pericycle. Parenchymatous. Foliar condition in monocot. Anatomy of dicot root. Still, all tissues inside of endodermis. All tissues inside of endodermis still undergoes secondary development. They undergo secondary development. Lateral roots are generated from pericycle. In root, protoxylem does not need protection, therefore they are dicot stem. These are cuticles, thick cuticles. Okay. Endodermis, starch sheath. Okay. Trichome, multicellular, can be branched. Okay. Epidermis, waxy coating cuticles. Waxy coating cuticles. Colon chymatous, hypodermis. Hypodermis, colon chymatous, provide mechanical strength to young stem. Provide mechanical strength to young stem. Okay. Hypodermis. Provide mechanical strength to hypodermis. Colon chymatous. I'm kind of sleepy, but it's okay. Colon chymatous, hypodermis. Provide mechanical strength to young stem. Then we have sclerenchymatous pericycle. Sclerenchymatous pericycle. Semilunar. Sclerenchymatous pericycle. Semilunar patches. Colon chymatous. Then we have cortical layer. Parenchymatous. Cortical layer. Conspicuous intercellular space. Cortical layer. Conspicuous intercellular space. Then we have endodermis, starch sheath. Pericycle, semilunar patches. These are sclerenchymatous. Xylem and okay, still from pith to pericycle. Medullary rays, parenchymatous. Okay, these are medullary rays, parenchymatous. Vascular bundle with cambium ring. Those are vascular bundle with cambium ring. These are semilunar patches of pericycle, sclerenchymatous. For strength, pericycle for strength. Okay, vascular bundle, phloem, vascular cambium and xylem. Phloem, vascular cambium and xylem. Medullary rays, primary radially arranged. Primary radially arranged, and they are parenchymatous. Primary radially arranged, they are parenchymatous. Medullary rays. Okay, we have pith, parenchymatous with intracellular space. Pith, parenchymatous with intracellular space. Then we have steel. From pericycle to pith. Pericycle to pith. Vascular bundle in stem, enlarged condition. Enlarged condition. First we have protoxylem, then metaxylem, cambium and phloem. Vascular bundle, enlarged ring arrangement in dicot. Cambium, open conjoined. Cambium, they are open. Vascular bundle are open conjoined. Conjoined BB. In dicot stem. Conjoined vascular bundle. Conjoined open dicot. Which ma cambium and conjoined closed monocot. Okay, and then monocot ma conjoined closed. Okay, no lateral growth. Open conjoined for dicot. Okay. Anatomy of monocot stem. Trichome,
epidermis, sclerenchymatous hypodermis, sclerenchymatous hypodermis, scattered vascular bundle, closed conjoined bundle, scattered vascular bundle, closed conjoined bundle. So everybody is smaller, so mitropathy larger, everybody is smaller. This is a ground tissue. The ground tissue के protoxylem, metaxylem, everybody. Sclerenchymatous bundle sheath. Sclerenchymatous bundle sheath. Scattered vascular bundle, closed conjoined bundle, closed conjoined bundle, sclerenchymatous hypodermis, sclerenchymatous hypodermis there. Sclerenchymatous hypodermis, trichomes, epidermis, sclerenchymatous hypodermis, scattered vascular bundle, closed conjoined bundle, sclerenchymatous bundle sheath, sclerenchymatous bundle sheath, round tissue, protoxylem, 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 okay. Primary and secondary growth. Primary growth, elongation of root, shoot, present in both monocot and dicot plant. Okay, primary growth, elongation of root and shoot, present in both monocot and dicot. Secondary growth, root apical meristem ले गर्दाखेरि हुन्छ, shoot apical meristem ले के गर्छ, primary growth हुन्छ हैन. Secondary growth मा cylindrical, lateral or cylindrical growth. Secondary growth, not present in monocot. Thickness of shoot and root, thickness of shoot and root only in dicot of angiosperm, present in gymnosperm. Okay, present in gymnosperm and dicot of angiosperm, dicot of angiosperm, monocot में present हुँदैन. Dicot of angiosperm and present in gymnosperm. Vascular cambium and Cork cambium teeth. Good morning, Shubham. Structural organization in animals, yeah. बाद में कर लेंगे NCERT तो. सेकेंड स्लॉट है क्या? नहीं नहीं, अभी जो स्टार्ट होगा ना वो 5th स्लॉट है. 4 स्लॉट तो कंप्लीट हो गए ना आज. और वैसे भी कम टाइम का लगा है, 30 मिनट का ही. इबाद, आर यू देयर? इबाद हमेशा कुछ ना कुछ टेक्स्ट करता है ना, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती उससे क्योंकि वो गलत टाइम पे बोल देता है. कब से पढ़ाई कर रहा हूँ आप? आई थिंक 6:30. 6:30, 7:30, 8:30.
9, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30. Is it 9:30? Slot 5. May morning 8 a.m. Good, good. Begins begins. Begins. No text. No texts. किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो ब्रेक में ही. जब सेशन स्टार्ट करेंगे ना तब बोलने लग जाते हो तुम लोग. ब्रेक पे कुछ नहीं बोलते. मैं यहीं पर हूँ. हाँ, मैं स्क्रीन से रीड कर सकती हूँ. अब आई थिंक आई विल गिव अ टेस्ट. I'll give a test. Eighty-one days. 81 days. It's just 80 days. 2 month ही तो है. 81 days भी गए आज. I think so. Where is it? Just let me check it. What is it? Full mock test. Okay, 20. Beginner. Next level 40. Okay. I want to reach, but I don't know if I will or I won't. Better तो होगा पहले से. A living world, biological classification, plant kingdom, animal kingdom, plant morpho.
Plant morpho na anatomy, plant anatomy. 30-minute simulate test. I'm starting the timer, okay? But I'll give test. The given figure is present in a fruit wall of nuts. Legumes, correct. Still includes vascular bundle pith, all of this. Correct ones. Cell possesses the ability to grow and divide. Cell have dense cytoplasm with prominent nucleus. Cell developed ER and mitochondria, well developed ER and mitochondria are present, not necessarily. So 1 and 2. Meristematic cell, okay. Meristematic cell, okay. 1, 2, 3 only. Collenchyma generally occurs, collenchyma, okay, in scattered dicot root, in a ring, in monocot root, in patches under epidermis, in dicot stem. ये थोड़ा देर रुको. Interfascicular cambium, inter, okay, is a secondary meristematic tissue. Transverse section of a typical monocotyledonous root. Identify the parts A to I and select the correct option. A. Root. A is root hair, correct. B is epiblema, correct. Root hair, epiblema. Okay, D is not. Okay, so 3 में से देखना है. C तुम्हारा होगा cortex, correct. Then endodermis. D is endodermis. E pericycle. F with पेरीसाइकिल 2 में है. ई एंडोडर्मिस होता है कि नहीं है रूट में. पेरीसाइकिल. F is pith. Z is phloem. G is phloem, correct. H is xylem. Root में protoxylem. पायरापट्टी उनसा. H is metaxylem. I is protoxylem. H is metaxylem. I is protoxylem. H is metaxylem. Breathe. Pericycle. D is pericycle. D is endodermis. E is pericycle. Which of the following is not component of xylem? Companion cells. Hardwood differs from sapwood in presence of ray and fiber, absence of vessels, and having dead and non-conducting element. The vascular cambium, Cork cambium are the example of. Cork cambium are the vascular cambium and lateral meristem. Axillary bud is present in axil of leaf, capable of forming mature branch, capable of forming flower. Plant length is increased by apical length. Yeah. A is D is which component has thin outer wall and highly thickened inner wall? D. This C. Guard cells. Okay. Guard cells. Phloem parenchyma is absent in most monocot, correct. Gymnosperm lack tracheids and vessels. Only vessels like companion cells. 1 and 3.
In temperate region, cambium is less active during winter season and forms fewer xylary element and have narrow vessels. This wood is that's called autumn wood. Which of the following will not happen during secondary growth of cambium ring? Secondary xylem produced is more than secondary phloem. Which of the following will not happen during secondary growth of cambium ring? Secondary xylem produce is more than secondary phloem. Primary and secondary phloem crush due to continued formation of aqueous in secondary xylem. Primary xylem remains more or less intact in or around center. The cell cuts off pith. The cells cut off towards pith matures into secondary phloem, and cells cut off towards pericycle matures into secondary xylem. Cells cut off towards periphery. Periphery ulta ho gaya. Which of the following statements are incorrect? Secondary growth usually occurs in monocot. Nah, wrong. Bark refers to all tissues interior to vascular community. Nah. Lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. Annular rings give an estimate of the age of the tree. Bark refers to periderm. And secondary phloem. 1 2 1 2 is wrong. 1 2. Sieve tube members have sieve plates where they join the other sieve tube members. Which of the following best describes the sieve plates? Sieve plates are necessary to allow conduction between sieve tube cells. Sieve plate allows joining of cytoplasm between adjacent tube cells. Sieve plates are the perforated end of sieve tube. I don't know, ये भी तो सही लग रहा है. Sieve tubes. A tissue is a group of cells having a common origin, usually a common function. An monocotyledonous the stomata are usually almost equally distributed in upper and lower epidermis. Which tissue is characterized by dead cell? A sclerenchyma. The trichomes in the shoot system are usually multicellular, correct? The trichomes helps in preventing water loss due to the transpiration. Okay, both are. मुझे नहीं पता ना. Which of the following tissues has dead cells with a thick and lignified cell wall having a few or numerous pits? A sclerenchyma. Increase the growth of plant organ is a result of the activity of intervascular cambium, Cork cambium. Increase the growth of plant organ is a result of intervascular cambium, Cork cambium. सारे के सारे. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are lentils, complementary cells, subsidiary cells, I think so. Which of the following tissues consist of the living cells? Vessels, tracheids, companion cells, and sclerenchyma. Companion cells. The chief function of phloem is the conduction of food. A phloem fiber or bast fiber are made up of collenchymatous cell. Phloem fibers are generally found in primary phloem. I don't know. Second वाला तो statement गलत है, इतना तो पता है. Heterogeneous tissues are vascular or Cork cambium, xylem or phloem element, dermal layer and ground tissue. Dermal layer, parenchyma or sclerenchyma. Heterogeneous tissue. Bulliform cells are responsible for curling of leaf in monocot, protecting the plant from the salt. Ground tissue does not contain cortex. Ground tissue में cortex हुन्छ, pith and pithyres, pericycle, xylem and phloem. Okay. तो क्या छोड़ा मैंने? अभी तो एक skip किया था ना 27 नंबर का. Phloem fibers or bast fibers are made up of collenchymatous cell. They are dead ना, तो collenchymatous both 1 and 2 are incorrect होगा इसका. कोई और skip किया है क्या? हाँ किया तो था. 4 वाला. Collenchyma generally occurs in scattered dicot. All of
this? एक मिनट, collenchyma कहाँ पर होता है? Collenchyma are there in stem of dicot. Stem of dicot. Stem of dicot. Dicot, okay. Root of dicot ना. I don't know. वही गलत हुआ होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। देखो कितना अच्छा हुआ ना, ये मेरा अब तक का शायद सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और स्किप भी 0 किया। वाओ, सिर्फ एक गलत, सारे के सारे सही। खुद के लिए ताली बजा लेती हूँ। ओह, ऐसी बात है, मैंने मीडियम वाला रॉन्ग किया। ये अभी जो नीट कार्ती, व्हाट इज इट? कातिया मौर्य। The gymnosperm consists of many free pistils in flower. Okay. Consists of many free pistils in flower. The gymnosperm consists of many free pistils in flower. Gynoecium consists of many free pistils in flower. Free pistil. Hello tomato. Michelia. Find out the incorrect. Sweet potato has root modification for storage of food. Stilt root arises from lower node of the stem. Rhizophora possesses pneumatophores. Pneumatophores are meant for anaerobic respiration. Is wrong. Which of the following is not a stem modification? Tendrils of cucumber, flattened structure of opuntia, picture of nepenthes, thorns of citrus. Stem to gods. A longitudinal section of roots starting from the tip of upward. The fourth zone occurs in which of the following order? Root cap, cell division, cell enlargement, and cell maturation. A drupe develops in mango, wheat. Leaves originate from shoot apical and arranged in acropetal order. Let me change the silver. What the heck is wrong?
Animal kingdom, plant anatomy. Start work on in the given transverse section of stem showing periderm, identify the paths leveled A, B, C, D. Okay, these are parenchymatous, right? Lenticels, these are complementary cells. Okay, so these are correct. Epidermis, complementary cell, cork, cambium, secondary cortex. Ground tissue includes all tissue external to endodermis, all tissue except epidermis and vascular bundle. Which of the following is true for endarched type of primary xylem? Protoxylem inside. Towards the protoxylem lies towards the pith of the organ. Which of the following is true? This metaxylem is towards the periphery of the organ. In dicot leaf, epidermis covers both the okay, दोनों ही कर देती हूँ ना, दोनों ही तो सही है. ओवर स्मार्ट मत बन, वो लोग तुझे अंडा दे देंगे. In dicot leaf, epidermis covers both the upper surface. In dicot leaf, okay, adaxial epidermis, adaxial and lower surface abaxial. The adaxial epidermis bears adaxial, okay, more stomata than the abaxial epidermis. One is two, but the reason is false. Bears more stomata than the abaxial epidermis. Abaxial पे ही तो होता है. Desert grasses often roll their leaves due to presence of multiform cells. The common feature shared by guard cell and mesophyll cell is presence of chloroplast, dumbbell-shaped structure, differentially thick cell wall, uniformly thick wall. Okay, these are epidermis. Okay, B are palisade parenchyma. Okay, then C is spongy parenchyma. Okay, D is stomata. E is xylem, F is phloem. xylem कौन बोला एंडोडर्मिस? ई कौन सा वाला है? अंदर वाला है ना. F is xylem, E is phloem. इसके अंदर तो मैंने देखा ही नहीं. F and E. Xylem, phloem. F is xylem. Root hairs are the unicellular elongation of epidermal cell. Sieve tubes are better situated for translocation because they possess border lumen perforated cross walls. Sieve tubes and perforated cross walls. Okay. Physiologically functional part of wood is hardwood only, sapwood only. Physiologically functional. Cells of the tissues are living and shows angular wall. Cells of tissues are living and shows angular wall thickening. They also provide mechanical support to tissue. Cells of tissues are living and shows angular wall thickening. Living तो colon कायमा है. Select the incorrect match. Protofloem, narrow sieve tubes. Metafloem, bigger sieve tubes. Gymnosperm, albuminous cells and sieve cells. Gymnosperm, vessels in xylem. Identify. Okay, this is a xylem bundle, this is a phloem bundle.
Incorrect regarding it. Okay, figure represents the radial vascular bundle in form of separate bundle. Xylem bundles and phloem bundles occur on different radii. These are characteristics of monocot and dicot leaf. मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ में तो ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है शायद स्टेम का ही पढ़ा मैंने तो। एक मिनट, उसमें भी तो लेटरल कैम्बियम क्यों ही चाहिए, बस स्टेम में कोई खाएगा चल जाएगा ना। Which of the following statement is and the correct option? Annual ring are distinct in plants growing in temperate region. Annual ring, temperate region. The temperate region, the climate condition are not uniform through the year. 1 and 2 are correct. A vascular bundle of roots are root conjoined और radial होता है ना roots तो। Select the incorrect statement of the following. End wall of sieve tube have sieve plate. Sieve tube element and companion cells are connected by pit filled present between their common longitudinal wall. Companion cells are specialized parenchyma cell having nucleus which control function of sieve tube. Phloem parenchyma is present in most of the monocot. The presence of intercellular space in the usual the intercellular, okay, parenchyma है तो sclerenchyma, collenchyma नहीं होता है. Monocot leaves possesses intercalary meristem, lateral meristem, apical meristem. Monocot leaves mass meristem. I don't know, इसका तो मुझे confuse हो गई. Endodermis of dicot stem is also called bundle sheath, start sheath, mesophyll, pith. Endodermis of dicot stem is also called bundle sheath. ना bundle sheath नहीं, start sheath. Meristematic tissues are composed of mature cell, fully differentiated cell, cell that cannot divide. Meristematic tissues are composed of mature cells, fully differentiated cells that cannot divide, immature cells with power to divide. Which of the following is termed as fundamental tissue system? Conducting tissue, ground tissue, vascular tissue, epidermal tissue system. Which of the following is known as fundamental tissue system? Fundamental tissue system. I don't know. Stone cells is an alternate name of stone cells. Phloem fibers, xylem fibers, sclerids, cortical fiber, sclerids होगा. ये भी मैंने तुक्का मार दिया, इस बार बहुत गलत होने वाला. The difference in phloem of gymnosperm and angiosperm is due to parenchyma, sieve cell, companion cell. Companion cell and sieve cell. The difference in phloem of gymnosperm and angiosperm is due to sieve cell. During water stress, the bulliform cells become flaccid. Makes the leaves curl inward. Make the leaf one B and C. Where is BC? Multicellular epidermal hair. Collenchymatous hypodermis, pith present, vascular bundle present in ring stem. Dicot stem. Epidermal hair. Oh shit. The fuck they are doing? Bulliform or motor cells are present in dicot stem. Upper epidermis of dicot leaves, lower epidermis of monocot leaves. Upper bulliform or motor cells are present in dicot stem. Upper epidermis of dicot. Upper epidermis of monocot leaves. Upper epidermis, lower or upper. Upper epidermis of monocot leaves. The older layer of secondary phloem in stem lies outward the vascular cambium. Well developed pith is found in monocot root and monocot stem. What the heck they are doing? The old rays, central dark colored non
Heartwood. Which of the following is a modification of parenchyma? Chlorenchyma, I don't know. I skipped 2 and there are 3 mistakes. Hiya. 3 mistakes and 2 skip. Okay. This is a mistake, right? Which of the following is enlarged type of primary xylem? Shut up. Metaxylem lies towards the periphery of the organ. Protoxylem lies towards the pith of the organ. हाँ तो दोनों ही सही था तो. Metaxylem. Protoxylem lies towards the periphery of the organ. Here's the breakdown of the other points. Why they are protoxylem lies towards ये तो नहीं होगा. Protoxylem lies towards the pith of the organ, while phloem tissues can be associated with protoxylem lies towards the pith of the organ. While phloem tissue can be associated with the xylem in vascular bundle, the statement is not directly related to enlarged arrangement of xylem. प्रोटोजाइलम नहीं था, ये प्रोटोफ्लोयम था. आपको क्या हो गया है? प्रोटोफ्लोयम लाइज टुवर्ड्स द पीथ ऑफ द ऑर्गन. ये तो सिली मिस्टेक हो गया. मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम के मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पीथ. हाँ सही है, सही है, सही है. ये वाला ओके. जिम्नोस्पर्म वेसल्स ओके. मेटाजाइलम बिगर सीव ट्यूब, प्रोटोजाइलम नैरो सीव ट्यूब. ओके ये सब राइट हो गया. वाह ये भी राइट हो गया. ओके those are F is phloem and E is F is xylem and E is phloem. Okay मैं ये drawing नहीं देखी थी फिर से. Then we have this 1 3 yeah then 12 gymnosperm. Okay done. 18 intercalary monocot leaves possesses okay intercalary meristem. 20 immature cells with power to divide. Meristematic tissues are composed of immature cells with power to divide. Okay एक तो सिली मिस्टेक हो गया. और ये 21 वाला. Which of the following term fundamental ground tissue system? Conducting tissue, epidermal, vascular. अयो ये भी तो ground tissue system. 2 सिली मिस्टेक. ग्राउंड टिश्यू ही तो था. बुद्धू कहीं की. Epidermal, ground tissue, conducting tissue system, vascular tissue system. यहाँ इतना लिखा भी है. 3 tissue system. Epidermal, ground and vascular. Okay, ground is fundamental tissue system. Fundamental tissue system. Fundamental tissue system, ground tissue. Okay, ground tissue system, fundamental tissue system. Stone cells is an alternative name for sclerids. Stone cells, sclerid. Sclerid. Stone cells. इसको क्या भी बोल सकते हैं हम लोग? Stone cells, STONE, stone cells. Stone cells, okay. Alhamdulillah. दोनों ही राइट थे. The difference in phloem of gymnosperm and angiosperm is due to sieve cells and companion cells. Wow. Wow, bro, wow, partially correct. For 25. 27, 28. Will develop pith is found in. Will develop pith is found in. कहाँ will develop pith उनसे बना था? Monocot root and dicot stem. Monocot root and monocot stem कर दिया मैंने. Monocot root, conspicuous pith. Conspicuous होता है stem में. Conspicuous pith. Spaces okay.
वेल डेवलप्ड पिथ, कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखो WEL, वेल डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड pith is found, well developed pith is found, well developed pith is found in monocot root and dicot stem, in monocot root and dicot stem. Well developed pith is found in monocot root and dicot stem. Okay. Hardwood. Collenchyma. Modification of parenchyma. Which of the following is not a modification of parenchyma? Collenchyma. अच्छा नॉट था वहाँ पर, ये भी तो सिली मिस्टेक हो गया. कितना करेगी क्वेश्चन अच्छे से पर यार. मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ. मॉडिफिकेशन पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं है. प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा, प्रोसेन, ये मत पर काइमा वैसे भी नहीं आएगा. प्रोसेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, CHLORN, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरिसन, AERN, एरेनकाइमा, 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 प्रोसेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा. ओके, दो तो तुम्हारा जो स्किप किया था वो तो सिली मिस्टेक जैसा ही हो गया ना. देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल था, और ये अच्छे से देख लेती तो कर सकती थी. ये वाला मिस्टेक हो गया. हाँ, ये नहीं आता था. मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट के रूट और डाइकॉट के स्टेम में कंस्पीशियस पिथ, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम. ओके, ये वाला तुमने छोड़ दिया. ये वाला इमेच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड, ये सही किया. स्क्लेरल स्टोन सेल्स सही तो किया. इंटरकैलर मेरिस्टेम, मोनोकॉट लीफ पोसेस. ओके, नंबर में क्या था जिम्नोस्पर्म. नैरो सीव ट्यूब्स, प्रोटोफ्लोएम, नैरो सीव ट्यूब्स, बिगर सीव ट्यूब, मेटा, लीटर ना, प्रोटोफ्लोएम. देन ये तो सिली मिस्टेक था. तो टेस्ट भी दे दिया मैंने. 60 क्वेश्चंस डन. ये कौन सा स्लॉट था वैसे? 5th स्लॉट, राइट? Let me check. 5th, yeah. It was 5th. Who's this? Really? Hi Sarvajita. Hi everyone, Akanksha, Nasir and Agnes. Hi everyone. This is okay, slot 5 is completed. Slot 5 done. Completed. Okay. होता होगा. मिनट लगो. पाँच मिनट का ब्रेक भी तो रखना. 1 2 3 4 5.
Till what time are you studying? I don't have any particular time. New tab. Nah. Let's send. Hi. सदा हाँ हो गया तो, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं किया है, वो वाला सेक्शन छोड़ दिया क्योंकि आई थिंक कि उसमें चेंजेस होगा, तो तब तक के लिए मैं वेट कर रही हूँ, वरना मैंने बाकी सब तो कर ही दिया और मैंने बाकी सब डॉक्यूमेंट्स भी रखा है, क्या बोलते हैं उसे, कलेक्ट करके। अभी सुबह सोचा ना कि सारा अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं थोड़ी दिन वेट करती हूँ, क्योंकि वो जो है ना यूट्यूब पे एक दीदी रेणुका अंतवाल, तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम वेट करो उसके बाद फिल करना, तो मैं उनकी बात सुन रही हूँ। वैसे अभी मैं पढ़ूंगी एनिमल किंगडम, मेरा सर्टिफिकेट आ जाए फिर मैं फिल करूँ। कौन सा सर्टिफिकेट? EWS, ओ सही सही है। ला 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 ला। मेरे पास तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ऊपर से वो भी है,
क्या बोलते हैं उसे, माइनॉरिटी भी नहीं हूँ, लाइक पेरेंट्स नहीं है, आई मीन तुम तो एटलीस्ट हो रिलीजन की वजह से ना, मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं तो वो किसको ब्लेम करूं, खुद ही को ही कर लेती हूँ। देखो ना सब लोग कितना क्यूट बनाया है ना ये मैंने, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर चिपका देती हूँ उसको, इतनी मेहनत से बनाया था। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हाँ कॉकरोच फ्रॉग वो सब पढ़ना ही है, पढ़ना ही। और 60 मिनट का रख दिया, 30 मिनट का रखना था ना। ये कौन सा वाला स्लॉट है? स्लॉट 6 SLOT स्लॉट 6 30 मिनट। ये वाला पिन कर देती हूँ। थैंक यू एलेक्स। दिया था ना उसके, वो ऐसे करके वो मैं ना रिमूव करके यहाँ का प्रोफाइल सेट कर दूँ। कैसा रहेगा अगर मैं इस प्रोफाइल को हटा के वो क्लोवर वाला लीफ वाला लड़की यहाँ पर लगा दूँ? तो मैंने कहीं तो नोट्स बनाया था, लेकिन आई डोंट नो कहाँ पर बनाया था। इसमें तो ना होगा, जूलॉजी का कॉपी ऊपर ही रख दिया है। पहले सिलेबस तो देख ले एक बार। डॉक्यूमेंट्स, ओके दिस आर पिक्चर्स। स्क्रीनशॉट पे था ना वो तो। Four to five questions lengthy, 2 to 3 pure theory, and 35 questions single line calculation. Okay, 35 questions single line calculation. Okay. अयो it's not here. मैंने फ़ोन पे लिया था स्क्रीनशॉट। Neat syllabus, neat syllabus, neat syllabus, neat, 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 neat. Is it the one?
CBSE. February 2025. ये नहीं है. मैंने सिलेबस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया शायद, लेकिन मुझे पता है उसमें फ्रॉग भी था. मैं एक बार वीडियो देख लेती हूँ ना, यहाँ पर कहीं है तो नहीं यूट्यूब पे. और एक बार चल के भी आऊँगी, फिर मुझे बैठे बैठे नींद आ जाएगी ना. मैं कल ठीक से नहीं सोई. My eyes are paining. Structural organization in animals. Neat one shot. Two months ago. विपिन सर ने किया है. अरे रितु मैम ने किया होता तो कितना अच्छा होता यार, सभी याद हो जाता. Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and I'm back with another session जिसमें हम 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं. Today's chapter is animal tissue. Animal विपिन सर से ही पढ़ लेती हूँ फिर. So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल यकीन के ऊपर. इन द प्रेजेंट जहां पर आज हम हमारी 11th क्लास के जूलॉजी सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं विद द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. ये जो चैप्टर है ये आप मान सकते हैं कि हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, बिकॉज़ दिस चैप्टर इटसेल्फ कंटेन्स 3 डिफरेंट सब चैप्टर्स. यहां पर 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है. तीनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डाइसी चैप्टर्स इन योर 11th क्लास सिलेबस, बिकॉज़ यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग को मेंशन किया हुआ है, लेकिन फ्रॉग से पिछले सालों में क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो सन 2017 में आया था. उसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर 2023 में वो टिश्यूज से एज वेल एज आपके टॉपिक से बने हैं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है. लेकिन जब आप इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फिजियोलॉजी के अंदर सारे के सारे टिश्यूज का डिस्कशन है. यानी अगर आप अच्छे तरीके से टिश्यूज को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा. आगे आने वाले चेक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस एंड हाइट लाइन. फिर ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे. 10th है ना. इट्स 9th February. 9th में 2 कर लिया तो ये 3 किया तो और अच्छा ना. फिर ये हाँ कर देखते हैं क्या होगा.
अभी इतना सारा टाइम पास किया मैंने। मेरा 3 आवर में कंप्लीट नहीं हुआ है तो अयो मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट किया क्या? इससे ही हम लोग का 3 आवर पूरा होगा तो, और उसमें तो ज्यादा दिखा रहा है। अगर आप इस सेशन को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ, अगर अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ चुके हैं तो एक बार तारा डाला इन द चैट सेक्शन प्लीज, या फिर लाल कलर के दिलों की बारिश कर विजिबल हूं, सारी चीजें एकदम सही हो सके। काफी सारे सरप्राइजेस हैं सेशन के अंदर। रिवीजन भी मैं खुद करा दूंगा, यानी एकदम बेस से चीजें उठा रहा हूं, इसका मतलब आपको पहले मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, रिवीजन भी खुद कराऊंगा, एनोटेटेड एनसीईआरटी भी खुद दूंगा। यानी जिनके पास नई एनसीईआरटी है उनको डरने की जरूरत नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टैग, पीवाईक्यूज टैग, सब कुछ आपको डे 1 पे ही मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी हम लोगों ने कोड रखी थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की एनोटेटेड एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीलू पीलू कलर से और सारे पीवाईक्यू नीलू नीलू और हरू हरू कलर से आपको पहले ही दिखा दिए गए हैं। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी पीवाईक्यूज जिस लाइन से आए हैं, जिस साल में आए हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन मिलेंगी। ये भी आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, नीट की ईयर्स तक मेंशन, राइट? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें होंगी। पहले आपको स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, फिर आपको रिवीजन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी भी दूंगा, बाद में आपका हालचाल भी पूछूंगा। सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। आपके ऊपर 0% दारोमदार छोड़ रहा हूं। एक चीज आपको करनी होगी जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, वो चीज अगर आप कर गए कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा जूलॉजी में, नंबर पूरे के पूरे बनेंगे, दैट इज अश्योरिटी। यस, सारी चीजें होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, माइंड मैप्स होंगे, सब कुछ होगा। जैसे जैसे इस सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे आपको पता लगेगा कि आपके विकू भैया आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेकर के आए। लेकिन बनने रहना है एंड तक, इतना तो पता करना है भैया कि एंड तक टिके रहेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को, फटाफट बताइए क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? फटाफट बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। यस, चलो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को आप कह सकते हैं अ गेटवे टू फिजियोलॉजी। अब आपको पता है कि आगे आने वाले जो 6 के 6 चैप्टर्स हैं, दी हेक, ये वीडियो लेक्चर 8 आवर का है। आई इतना लंबा तो नहीं वेस्ट कर सकते ना एक छोटा सा चैप्टर पर। भैया मैंने कोई भी बायोलॉजी का 8 आवर वाला चैप्टर तो नहीं देखा। यू देखा भी है लोगों ने। वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग-अलग ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको उन ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा। तो अगर आप उन्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ लें तो आपकी फिजियोलॉजी काफी आसान हो जाएगी। चाहे वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर हो, चाहे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो, चाहे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन हो, 6 के 6 चैप्टर के अंदर मैं आपको आज वाले सेशन के पॉइंट्स रिपीट होते हुए दिखा दूंगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप आज का सेशन ढंग से देखते हैं, आगे आने वाले 6 लेक्चर्स आपके मस्त मक्खन की तरह निकल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट इज द ओनली टॉपिक गिवन इन एनसीईआरटी। ओनली टॉपिक गिवन इन एनसीईआरटी मतलब सर आपको पता है जिनके पास नई एनसीईआरटी है कि एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच और एनसीईआरटी का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन इनसे 2023 में भी सवाल पूछा गया था तो ये तो हमको पढ़ना ही है। लेकिन फ्रॉड इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में इकलौता यही टॉपिक है जो रिटेन किया गया है। इसका मतलब इसमें कुछ तो खास बात है। इससे कुछ सवाल आने की प्रोबेबिलिटी तो नेक्स्ट ईयर है, तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग कॉकरोच की बात करेंगे। अगर आप कॉकरोच की बात करें तो नीट 2023 में लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आपके 2 क्वेश्चन आंसर पूछे गए। What science says about procrastination? Creating to-do list is not going to help you. Installing permanent और 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 8 नंबर। ये 8 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं भाई, ये मैरिज सेटिंग नंबर है। तो इस टॉपिक को हम लोग नहीं छोड़ सकते और बच्चों को अक्सर ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लगता है। यही पूरा का पूरा हमारा फ्लो रहेगा आज के सेशन का। वी विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज, देन वी विल मूव टू फ्रॉग एंड देन वी विल मूव टू कॉकरोच। यस, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस आराम से बैठ के चीजों को सुनते रहिए। अब आपको पता है कि दुनिया में 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बताइए ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई होगी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स हैं उस बेसिस पे दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में तोड़ दिया, विभाजित कर लिया। पहली जो कैटेगरी है इसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी। यूनि का मतलब क्या होता है भैया? यूनि का मतलब होता है सर 1 एंड सेलुलर में सेल शब्द छुपा हुआ है, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। इनकी जो बॉडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल देखने को मिलेगा, कोई दूसरा सेल नहीं होगा। एक ही सेल है वही पूरी की पूरी बॉडी बनाएगा। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आरएच विटेकर। 5वां बार का रिवीजन है। अब 2x में समझ में नहीं आएगा तो किस में आएगा, खुद ही सोचो। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि 1969 में किया गया था। वहां दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को आरएच विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम में तोड़ दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया। यहां पर ये जो 2 किंगडम्स हैं, मोनेरा इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और दूसरे जो किंगडम है प्रोटिस्टा इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यानी मैं यहां पर मोनेरा या प्रोटिस्टा की किसी भी मेंबर का नाम लिख दूं वो तो सही हो जाएगा।
चाहिए तो बैक्टीरिया होते हैं, तो मैं बैक्टीरिया का नाम लिख सकता हूँ। बैक्टीरिया के अलावा मैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी का भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात करूँ तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन का भी नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, प्रोटोजोन का भी नाम लिख सकता हूँ, अमीबा का भी नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, करेक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे अगर मैं अमीबा की शक्ल ड्रॉ करूँ तो अमीबा की शेप कैसी होती है मेरे भाई, अमीबा की शेप होती है सर इरेगुलर, भाई परफेक्ट शेप इसकी नहीं होती। ये अमीबा का मैंने न्यूक्लियस बना दिया और ये आपकी इरेगुलर सी शेप बना दी। अब मुझे छोटी सी बात बताइए मेरे भाई, अब मुझे छोटी सी बात बताइए, अगर ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या अपनी लाइफ से रिलेटेड सारे के सारे काम किसी एक सेल में। मैं ना ये वीडियो नहीं देखने वाली, 8 आवर का है ना, मैं मेरे नोट्स ही फॉलो कर देती हूँ। लैंड वर्टिब्रा morphology of cockroaches, male reproductive, female reproductive parts, physiology। हाँ तो उन्होंने भी सही पढ़ाया होगा ना, फिर प्लानिट अमेरिकन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मैंने गुस्सा तो आता है लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ ना। तुम ये सही से फिर से ठीक से एक बार बनाओगे ना? हाँ ज़रूर। हमको अंग्रेजी बोल नहीं आता है, तुम क्या बोल रहे हो? और ना अभी तुम्हें ना बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ना पढ़ने वाला सेशन है ना, तो तुम भी पढ़ो ना। डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना उसको चैट सेक्शन को बंद कर दूँ, लेकिन रहने दो। और वैसे भी यूट्यूब पे ना अगर तुम्हें सच्ची में अंग्रेजी सीखना है तो यूट्यूब में भर भर के वीडियो पड़ा है, वहीं से देख लो ना। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती, मेरा भारत महान ना, तो हमें यही पसंद है, हिंदी ही पसंद है हमको। सॉरी, इट्स ओके, तुम ब्रेक टाइम पे बातें कर सकते हो लेकिन अभी नहीं कर सकते, ओके? I fry you too, Khan. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, इट्स अ गेम। इसका नाम आई डोंट नो, लेकिन तुम जाके सर्च करना कि पढ़ने के लिए कुछ वॉच चाहिए, ऐसा करके अमेज़न पे सर्च करना तो तुम्हें मिल जाएगा। दीपक, मैंने तो स्टॉप वॉच करके सर्च किया था, तुम भी वही करके सर्च कर सकते हो। मैं अब सेशन स्टार्ट कर रही हूँ कि कोई नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज। 1 2 3 स्टार्ट। cockroaches. PD planeta americana around PD planeta structural organism morphology of cockroaches. Really PD around PD
around planeta Earth Americana. Periplaneta Americana. Size: cockroach range from 1/4 inch to 3 inch, 1/4 inch to 1/4 inch to 3 inches, 0.6 to 7.6 centimeter, 7.6 centimeter. Phylum Arthropoda. Class Insecta. Order Dictyoptera. Dictyoptera. Family Latidae. Genus Periplaneta. Species Americana. Periplaneta americana. Phylum Arthropoda. Class Insecta. Order Dictyoptera. Dictyoptera. Family Blatidae. Genus Periplaneta. Species Americana. Periplaneta americana is equals to 34 millimeter to 53 millimeter, in which wings are extended beyond the tip of abdomen in males. Okay. Size: cockroaches range from 1/4 inch to 3 inch, 0.6 to 7.6 centimeter. Periplaneta americana 34 millimeter to 53 millimeter, in which wings extend beyond the tip of abdomen in males. Color: bright red, yellow and green colored cockroaches have been seen in tropics. Bright red, yellow, green colored cockroaches have been, okay, yellow भी होता है. Bright red, yellow, green colored cockroaches have been seen in tropics. Periplaneta americana is equal, किस इसका कलर, okay, reddish brown. Periplaneta americana reddish brown, but yellow, light red and green, bright red. Okay. Exoskeleton chitinous plate. Exoskeleton chitinous plate. Body: head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Exoskeleton chitinous plate or sclerites. Tergites dorsal. Sterites, tergites and pleurites. Tergites, sternites है, N भी है. Okay. Tergites, sternites, pleurites. Tergites dorsal, sternites ventral, pleurites lateral. Pronotum tergum of prothorax. Broad and concealed head, bright yellow shade over it. Pronotum tergum of prothorax, broad and concealed head, bright yellow shade over it. Arthrodial membrane, articular membrane. Arthrodial membrane, articular membrane for attaching sclerite with each other. Arthrodial membrane, articular membrane for attaching sclerite with each other. Head somewhat triangular and direct downward along longitudinal axis. Made by the fusion of 6 chitinous plate. It has pair of compound eyes, pair of antenna, mouth with mouth parts. Somewhat triangular and directed downward along longitudinal axis. Made by the fusion of 6 chitinous plate, it has pair of compound eye, pair of antenna, mouth and mouth parts. Compound eyes, made up of nearly 2000 hexagonal units called ommatidium per eyes. Compound eye made up of nearly 2000 hexagonal unit called ommatidium per eye. Okay, per eyes. Laterally placed vision, mosaic vision, antenna, sensory, tactile and chemoreceptor. Omatid per eye. Okay, laterally placed vision, mosaic vision, antenna, sensory, tactile
chemoreceptors, joined structure present in antennary sockets in front of eyes. Note, between eyes and antennary socket. Rudimentary eyes. Between eyes and antennary socket, rudimentary eyes called ocellus fenestra is present. Ocellus fenestra is present. Okay, so scientific name Periplaneta americana. Scientific name of cockroach Periplaneta americana. Periplaneta americana. Periplaneta americana. Periplaneta americana. Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Class Insecta. Class Insecta. Order Dictyoptera. Class Insecta. Order Dictyoptera. Family Latin. Family Blatidae. Blatidae. Family Blatidae. Genus Periplaneta. Okay. Scientific name Periplaneta americana. Phylum Arthropoda. Class Insecta. Family Blatidae. Order Dictyoptera. Family Blatidae. Genus Periplaneta. Species americana. This is genus. This is GS. KGS. Genus Periplaneta. Species americana. Genus species Periplaneta species. Okay, species americana. GS. Species Astaghfirullah. Species americana. Periplaneta americana. Species americana. Color bright red, yellow, and green color cockroach have been seen in tropics. Periplaneta americana reddish brown. Color reddish brown. Color COLOR. Color reddish brown. Okay. Size cockroach. Exoskeleton. Okay. Body, head, thorax, and abdomen. Periplaneta americana. My brother is calling me.
अया मुझे ना नहीं जाना है वहाँ पर. इट्स ओके माँ, इट्स ओके, तुम बोल सकती हो. Size cockroaches ranges from 1/4 inch to 3 inch, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. मुझे नहीं जाना है, मैं उससे उन्हें कैसे जाके बोलूँ कि मुझे नहीं करना है अब. Periplaneta americana 34 millimeter to 53 millimeter, in which wings extend beyond the tip of abdomen in male. Size Swedish from size 34 mm to 53 mm, in which wings extend beyond. Size 34 millimeter, 34 millimeter. 53 millimeter. 34 millimeter to 53 millimeter. In which wings extend beyond the tip of abdomen in males. Wings in which 51 millimeter to 53 millimeter. Wings extend beyond the tip of abdomen in male. Exoskeleton titanus plate. Okay. Wings extend beyond the tip of abdomen in males. Okay. Size 34 millimeter to 53 millimeter. Wings extend beyond the tip of abdomen in males. Wings extend beyond the tip of abdomen in males. Color. Okay, this is color of cockroaches. Size of cockroaches ranges from size of cockroaches ranges from 1/4 inch to 3 inch. 1/4 inch to 3 inch to 3 inches. (0.6 to 7.6). 7.6 centimeter. 0.6 to 7.6 centimeter. Okay. Color bright red, yellow, green colored cockroaches have been seen in tropics. This is 1, 2. Yellow, green, bright red roaches have been seen in tropics. CROCK. Roaches are seen in tropics. 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 Okay. 1/4 inch to 3 inch. 0.6 to 7 centimeter. 34 millimeter to 54 millimeter. And the wings extend from beyond abdomen in males. Yellow, green, bright red roaches have been seen in tropics. Okay. Reddish brown. Okay. So Periplaneta americana, reddish brown. Size ranges from 34 millimeter to 54 millimeter. Phylum Arthropoda, class Insecta, family Blatindae,
Blatidae, okay, Blatidae. Then class, phylum, Arthropoda class, family, class and sector, family, Blatidae. Then what do we have? Genus, Periplaneta, species Americana. Order, Dictyoptera, okay. Body, head, thorax and abdomen. The body is differentiated into body of Periplaneta americana. Body is differentiated into head, H-E-A-D, head, thorax, T-H-O-R-A-X, thorax and head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. HTA, hata, abdomen. Okay. Exoskeleton, chitinous plate or sclerites. Okay. Sclerites, tergites dorsal, sclerites ventral, pleurites lateral. कितना सारा नया नया टर्म है. Pronotum, tergum of prothorax, broad and concealed head, bright yellow shade over it. Pronotum, okay. Tergite, sclerite, chitinous, exoskeleton, chitinous, exoskeleton, chitinous plate or sclerites. Exoskeleton, chitinous plate or sclerites. Chitinous, C-H-I-T-I, chitinous, N-O-U-S, chitinous plates, chitinous plates, or sclerites. S-C-L-E-R-I-T-S, sclerites, R-I-T-S. Astaghfirullah. Chitinous plates or sclerites, S-C-L-E-R. किसी ने ना वो जलाया शायद, इनेसेंस स्टिक. इतना अच्छा स्मेल आ रहा है. बाहर से खुशबू वाली स्मेल आ रहा है. Exoskeleton, chitinous plate or sclerites. Sclerite is again divided into 3 terms. Sclerite, sclerite 3 टर्म में आगे फर्दर बताया. sclerite, S-C-L-E, S-C-L-E-R-I-T-S, sclerites, R-I-T-S, sclerites, tergites, T-E-R. कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. हाँ, tergites, T-E-R-G-I-T-S, tergites dorsal, T-E-R-G-I-T-S, tergites, G-I-T-S, G-I-T-S, tergites, T-E-R-G-I-T-S, tergites dorsal, okay. Tergite, T-E-R-G-I-T-S, tergites. Then sclerites, sternites, S-T-E-R, stir, N-I-T-S, sternites, tergites, G-I-T-S, pleur, sternites, ventral, tergites, terg, stern, pleurites, lateral. Tergites,
dorsal, ventral, sternite, then lateral. Lateral is pleurites. Lateral, correct. Sclerites, okay, chitinous plate. Pronotum, tergum of prothorax, broad and concealed head. Tergum of prothorax, broad and concealed head, bright yellow shade over it. Sternite, arthrodial membrane and articulate membrane for attaching sclerite with each other. Okay, arthrodial membrane and articular membrane, arthrodial and articulate, membrane and arthrodial membrane or articular membrane for attaching sclerites with each other. Okay, pronotum लेके बंदिसा बंदा के रचिए tergum of prothorax, tergum of prothorax, tergum of prothorax, pronotum, tergum of prothorax, tergum broad हुन्छ, head लाई conceal गर्छ, bright yellow shade over it. Then only head आउँछ. Mouth part, thorax, इसके बाद ही आएगा abdomen, इसके बाद आएगा abdomen. ये बार बार तू भूलेगी, इसको ना 101 बार रिवीजन करना होगा तभी याद रहेगा. Arthrodial membrane and articular membrane, membrane for attaching steroids with each other. membrane is membranes for attaching sclerites with each other. Attaching membranes for attaching sclerites with each other. Sclerites with each other. Arthrodial membrane, articular membrane, arthrodial membrane, astaghfirullah. Arthrodial membrane and articular membrane. Arthrodial membrane, articular membrane. Arthrodial membrane, articular membrane for attaching steroids with each other. Astaghfirullah. Members for attaching sclerites with each other. Arthrodial membrane, articular membrane. Pronotum, tergum of prothorax, broad and concealed head, yellow bright shade over it. Pronotum, कहाँ लिखोगी? यहाँ पर लिख देती हूँ. Pronotum, tergum of prothorax, pronotum, tergum of prothorax, thorax, tergum of prothorax, tergum of prothorax, broad and concealed head. BROAD, broad and concealed, CONCEL, conceal, broad and concealed head, HEAD, head. Tergum of prothorax, broad and concealed head, bright yellow shade over it, bright yellow, BRIGHT, bright yellow shade over it, shade, SHD, shade over it, OVER, over it. Pronotum. Is it pronotum? Yes. Pronotum. Tergum of prothorax,
thorax, bright yellow color shaded over it, broad हुन्छ and conceal head. It conceals head. It conceals कसलाई छोप्छ? हेडलाई छोप्छ. Pronotum. It is pronotum. Okay. Pronotum. Tergum of prothorax. Tergum of prothorax. Broad and conceal. It is broad and conceal head. Yellow shade over it. Bright yellow shade over it. Okay. Pronotum. Tergum of prothorax. Head. Somewhat triangular and directed downwards. Okay. Triangular, directed downward along longitudinal axis. Head. TRI. Triangular. Downward. Directed downward along longitudinal axis. Directed downward. Directed downward. DOWN. Triangular. Directed downward. Directed downward towards longitudinal axis. Directed downward. Directed downward along longitudinal axis. Okay, go. Along. Directed down along longitudinal. TUDINAL. EXIS. Axis. Okay. ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया तो ऐसा होगा. Head. Somewhat triangular, directed along the longitudinal axis. Directed along the longitudinal, downward along longitudinal axis. Okay. Made by the fusion of 6 chitinous plate. Head is made by fusion of 6 chitinous plate. It has pair of compound eyes, pair of antenna and mouth with mouth parts. Okay. Downward along longitudinal axis. Not triangular, directed downward along longitudinal axis. Made by the fusion of 6 chitinous. Fusion of 6 chitinous plates. 6 chitinous CH. Made by the fusion of 6 chitinous plate. हाँ ऐसे चार्टर लगाने का दिल करता है ना, लेकिन don't think about it. Made by fusion of 6 chitinous plate. It has pair of compound eyes. Pair of antenna. Pair of antenna, mouth with mouth parts. Pair of antenna. Antenna. Mouth with mouth parts. Somewhat triangular in the downward direction along the longitudinal axis. Downward direction, in the downward direction, directed downward along longitudinal axis. Made up of 6 chitinous plate. Made up of 6 chitinous plate. It has pair of compound eyes. Pair of compound eyes, pair of antenna and mouth parts. Mouth and mouth parts. This is head. Compound eyes. Compound eyes made up of nearly 20,000 hexagonal. Pair of compound eyes, pair of antenna and
Okay, compound eyes. COMPOUND, compound eyes. Compound eyes. Nearly 20,000 hexagonal units called omatidium per eyes. 20,000 omadium. 20,000. 2,000. 2,000 omatidium. Omatidium. T-dium. 20,000 omatidium. Omatidium per eyes. 20,000 omatidium per eyes. Omatidium. 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 20,000 omatidium. Hexagonal unit per eyes. Hexagonal unit. Unit. 2,000. Not 20. It's 2,000 omatidium per eyes. 2,000 omatidium per eyes. Laterally placed. Compound eyes. Laterally placed. Laterally placed. PLACED placed. Laterally placed. Laterally placed. Okay. Laterally placed. Vision. Mosaic vision. Less resolution and sensitive to even dim. Perfect for nocturnal vision. Laterally placed. Okay. Laterally placed. Omatidium. 2,000 per eyes. Okay. Laterally placed. Vision mosaic. Less resolution, sensitive to even dim light. Antenna. Sensory tentacles. Chemoreceptors. Present in antennary socket in front of eyes. Present in antennary socket in front of eyes. Between eyes and antennary socket. Rudimentary eyes called ocellus fenestra. Ocellus fenestra is present. Okay. Slot 6 हो गया हम लोगों का. Slot 6 done. Break. 5 मिनट का नहीं, 7 मिनट का. सात thala for a reason. 7 thala for a reason. MST. Mohendra Singh Dhoni is a... My eyes are paining. क्या ही कर सकते हैं, आँख का तो यही है. थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ, है ना. कुछ खा भी नहीं सकती, सिर्फ वॉलेट की जगह पर वॉलेट ही है. इवन चिल्लर भी नहीं होगा उसके पास, तो मैं खा भी नहीं सकती. आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, मान के चलो.
अनिकेत, रोम रोम जी, सत श्री अकाल। My eyes are paining, my eyes are paining. We still have 4 minutes. क्या करे? मैं बाहर घूम के आती हूँ वहाँ। वैसे भी तुम लोग नहीं बोल रहे हो, नहा ले, कितने दिन हो गए। तू जैसा नहीं हूँ, समझा? गंदा कहीं का। दिखा क्रीम ब्रूली लगा शेफ विकास को ब्यूटीफुल। नेट अच्छे से नहीं चल रहा है। हाय हर्षा, अब कोई बात नहीं करना, हाँ, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट होगा ना, इसलिए। अरे is 2000 omatodium per eyes. 2000 omatodium per eyes. Okay, omatodium hexagonal unit. Okay, hexagonal unit called omatodium per eyes. Okay, laterally placed. They are laterally placed. Mosaic vision. Mosaic vision. Perfect for nocturnal.
NOCTURNL, nocturnal behavior, nocturnal vision, nocturnal, NOCTURNL, nocturnal vision, perfect for nocturnal vision, VISION, astaghfirullah, mosaic vision, perfect for nocturnal vision, antenna, sensory, laterally placed vision, mosaic vision, antenna, sensory, tactile, chemoreceptor, less resolution and less sensitive to even dim lights. Shit. Less resolution, sensitive and sensitive to even dim light, less resolution and dim lights. Okay, less resolution and sensitive to even dim lights, less resolution, perfect for nocturnal vision, mosaic vision, antenna, sensory, tactile. Less readily placed, less resolution and sensitive to even dim light, mosaic vision, perfect for nocturnal vision, antenna, sensory, antenna, 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 sensory, tactile and chemoreceptor, sensory, tactile, chemoreceptors, joint structure, sensory, sensory, tactile, sensory and chemoreceptors. Tactile, TACTILE, tact and tactile and tactile chemoreceptors, CHEMO, chemoreceptors, tactile and chemoreceptors. Okay, sensory, tactile and chemoreceptors, antenna, sensory, tactile and chemoreceptors, joined structure, joined structure, present in antennary socket in front of eyes, present in antennary socket in front of eyes, present in antennary socket, present, joint structure, antenna, present in antennary socket, present in antennary, ANTENNARY, antennary socket, SOCKET socket, antennary, present in antennary socket in front of eyes, front of eyes. Okay, present in antennary socket in front of eyes, present in front of eyes, present in antennary socket in front of eyes. It's okay, na? Joint structure, sensory, tactile and chemoreceptor, joint structure. Between eye and antennary socket, rudimentary eye called ocellus fenestra is present. Ocellus fenestra. OCELLUS, ocellus fenestra, ocellus fenestra, FENESTRA, ocellus fenestra, between eye and antennary socket, between eye
and antennary socket. Antennary between eye and antennary. A-N-T-E. Antennary. Antennary. N-N-A-R-Y. Antennary socket. Between eye and antennary socket. Rudimentary eyes. Ocellus fenestra. Ocellus fenestra present between antennary socket and मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, you have to control it. Antennary socket present between antennary socket and compound eyes. Between eyes and antennary socket, rudimentary eyes. Those are rudimentary eyes called ocellus fenestra. Ocellus fenestra. इतना गुस्सा आता है ना मुझे इन लोगों पे. कोई बात नहीं, it's okay माँ. Sensory tactile chemoreceptors. Antenna sensory tactile chemoreceptors join the structure present in antennary socket in front of eyes. Bristle. Pedicel, socket, scape. Bristle, pedicel, bristle, scape and socket. इतना गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, control bro, control. Less advance, okay. Compound is less advance. Pedicel, bristle, scape and socket. Pedicel, bristle, scape and socket. शायद ये एंटीना का दिया है इन लोगों ने. Ocellus fenestra, compound eye and antenna socket, anatory socket, anatory socket हो, antennary, I don't know, antennary, anatory, whatever, annate, A-N-N, ये annate तो नहीं है, antennary है. सॉकेट, पेडिसल, यहीं कहीं बना दो. Bristle. Bristle. Scape. Pedicel. Bristle, scape, bristle, scape, pedicel, socket, bristle, scape and pedicel, ocellus fenestra. Mouth parts, mouth with mouth parts. क्यों ना ऐसा होता कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता,
कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा होता. न्यूरल बायोलॉजी, which subject you are studying? Bio. Disturbing environment, exactly. But we can't help. They keeps on working day and night. इन लोगों की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है, किसी और इंसान की वजह से गुस्सा आ रहा है. इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा करूँ कि निचोड़ दो उसका साड़ी, फुटा दो, ऐसा करके इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है. It's okay, माँ. वैसे भी मैं अभी गुस्सा कंट्रोल करने वाली मोड में हूँ ना, वरना मैं गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा है. बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. ऑथर के ऊपर गुस्सा ऑथर के ऊपर नहीं आ रहा है. Mouth parts. Biting and chewing type of mouth. Okay, biting and chewing type of mouth parts made up of labrum, upper lips, labium, lower lips, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx, modified chitinous irregular structure, mandible, maxillary, hypopharynx. Mandible, maxillary, pair of maxillary, hypopharynx, labium and labrum, upper, labium, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx, okay. It's okay, ma. Labium, this one is labium. Prosothica, mandible, maxilla, hypopharynx, labial palp, 3 segment, maxillary palp made up of 5 segment. गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है माँ. Biting and chewing type of mouth made up of labrum, upper lip, labium, lower lip, pair of mandible, pair of maxillary and hypopharynx. Okay, mouth, biting and chewing type of mouth. Biting and chewing. आई थिंक मैं ना अपने छोटे भाई के पास चली जाऊंगी, नामसांग के पास. वही मुझे अब थोड़ी सी भी हंसी दिला सकता है. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मूड ही खराब हो गया. Biting and chewing type of mouth part made up of labrum, labium, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. Labrum, अपर लिप्स होता है या अपर माउथ होता है? अपर लिप ना, अपर लिप. labrum, labium, lower lip. labrum, labium, अस्तगफिरुल्लाह. इट्स ओके माँ. labrum, labium हो गया बहुत तेरा नाटक. ओके, चुपचाप पढ़ाई कर लड़की. pair of maxillary and mandible, pair of mandible, pair of mandible, pair of mandible. Then we have pair of maxillary, pair of mandible, pair of maxillary, pair of maxillary, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx, isn't it? Hypopharynx, hypopharynx, pharynx, pharynx, okay.
hypopharynx. Labrum, labium. Labrum, upper lip, labium, lower lip, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. Labrum, labium, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. It's okay. Biting and chewing type of mouth made up of labrum, labium, pair of maxillary, pair of mandible, hypopharynx. अयो, उल्टा मोटिवेशन की तो मुझे ज़रूरत है ना, मैं किसी को क्यों मोटिवेट करूँगी, है ना. What is it? Labrum, labium, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. Modified chitinous irregular structure. Modified chitinous structure made up of modified chitinous irregular structure. Made up of मैं जैसे भी करके इसको एंड कर देती हूँ. Made up of modified chitinous, CHITINOUS, made up of modified chitinous, NOUS, chitinous NOUS, made up of modified chitinous, made up of modified chitinous structure, made up of modified chitinous structure. Made up of chitinous structure. Labrum, upper lips, labium, lower lips, pair of mandible. Labrum, upper lip, labium, lower lip, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. Chitinous irregular structure. Biting and chewing type of mouth made up of labrum, labium, pair of mandible, pair of maxillary, hypopharynx. Chitinous irregular structure. Labrum,